हम यहाँ उसका इमेजिन नहीं कर सकते जितनी बड़ी तबाही थी। ये इस सदी का जो है वो 5वां बड़ा ज़लज़ला था पूरी सदी में, और 60,000 पीपल एवरीवेयर, डेवास्टेशन हर जगह पे। लोगों के साथ इतना जज्बाती उनकी फैमिलीज़ को देखना, और मेरे ख्याल में हर दिन जो है वो हमारे लिए एक नया एक सीन था, एक नई चीज़ थी। लोगों को उस सिचुएशन में देखना, उनके साथ मिलना। कई जगहों पे ऐसा भी हुआ कि हम रेस्ट करने के लिए बैठते थे तो साथ हमारे 4-4, 5-5 डेड बॉडीज़ जो है वो पड़ी होती थी। तो अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है वो क्लैप्स हो गई हैं बिल्कुल, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी थी कि इंटैक्ट हैं, पार्शली डैमेज हैं, कुछ हिस्सा उसका गिर गया हुआ है लेकिन कुछ अभी कायम है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है इस पूरे सिनेरियो में कि हम जिस रबल के अंदर विक्टिम को सर्च करते हैं, फिर लोकेट करके उस तक अप्रोच करनी है। अब हमें अब बाहर से तो नहीं आवाज़ दे सकते कि आप बाहर आ जाएं, तो विक्टिम तक हमें पहुंचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम का मैंडेट है कि हमने लाइव विक्टिम वहाँ से एक्सट्रिकेट किए। तो उस तक पहुंचने के दौरान अब साथ एक बिल्डिंग ऐसी जो कि प्रोन टू फॉल, वो गिर जाएगी किसी भी वक्त। तो वो सारी चीज़ें अरेंज करके, फिर चीज़ें इंश्योर करके कि सेफ़ हों हमारी एंट्री, और हम सेफली विक्टिम को भी निकाल के ला सकें और ख़ुद भी आ सकें। तो वो अक्सर ये रहता था जब किसी कन्फाइंड स्पेस में या ऐसी वॉइड्स, ऐसी स्पेसेस उसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर कई जगह पे बन गई हैं जहाँ विक्टिम है, तो हमें उस तक पहुँचना है। तो वो सारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, और बिल्डिंग्स जो अभी गिरने का ख़दशा है, तो ये दोनों ऐसे ही, और हम उसमें इनएक्शन भी हैं। तो इन सब में जो है ना, ये लगता था कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं, तो हम रेस्ट भी कर रहे हैं, तो वो रोड साइड पे या किसी ऐसी ही जगह पे हैं जहाँ ऐसी जो मुनहदम नहीं हुई इमारत वो भी हैं और गिर सकती हैं। तो जब कभी ऐसा होता था तो उन्हीं स्ट्रेटजीज़ पे कि हमें बिल्कुल किसी खुली मैदान में, खुली जगह पे पहुंचना है, तो दौड़ लगती थी जब कभी आफ्टर शॉक्स आते थे। कहाँ पे 2005 का जब ज़लज़ला हुआ था, लोग हमें बाहर से मदद करने आ रहे थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम बनाया और ऐसी पहली टीम बनाई जिसको पूरे जनूबी एशिया में पहली टीम थी जिसको अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली। आज उस कैपेसिटी बिल्डिंग की बदौलत हम, जब टर्की में ये हुआ है तो उसको हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सके जब वहाँ पे ज़लज़ला आया। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम तुर्किया में 16 दिन के रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद पाकिस्तान वापस आ गई, मगर आते हुए अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्किया के हज़ारों लोगों की दुआएं भी साथ लेती आई। जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे जो लीडर साहब हैं, जो हमारे कमांडर हैं, रेस्क्यू टीम के कमांडर, तो जब हम एयरपोर्ट पे इस्तांबुल पे आए तो मुझे उस वक्त रोना आया कि जब लोगों ने एक लेन के अंदर खड़े हो गए और फूल पत्तियाँ हम पे ऊपर निछावर कर रहे थे। तो इतने वो क्राइसिस में, इतने डिज़ास्टर में भी वो लोग इस तरह हमारी वो कर रहे थे कि जिस तरह हमको बड़े हीरो हैं। उस वक्त मेरी आंखों में बड़े आंसू थे और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज होगी। जिस तरीके से उन्होंने, फिर वो नहीं, मुझे याद है एक जो बहुत बड़ा था जिस वक्त हमने वहाँ पे जा रहे थे और हमने हमारे पास टेंट थे और सामान था जो हमने वहाँ पे जो था वहाँ पे जो हमने देखा कि मुतासरीन है उनको हमने वो दिया, और जिस वक्त उनके कुछ फैमिलीज़ को भी हमने रेस्क्यू किया था, तो उस बंदे ने आके पाकिस्तान के झंडे को जो है वो चूमना शुरू कर दिया। और उस बंदे के जो एहसासात थे, था थोड़ा बुज़ुर्ग था, उसने कहा जिस तरह से आपने आके खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे भी हमारी ये सारा तुर्किया का, और पहले भी जब भी ज़रूरत पड़ी है टर्की में, तो पाकिस्तान ने जिस तरह से मदद की है उसी तरह से आज आप आके मदद कर रहे हैं। तो जो उसके जज्बात थे, एहसासात थे, मैं उनको बयान नहीं कर सकता। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि अगर उसने आके पाकिस्तान के झंडे को जो है वो चूमना शुरू कर दिया तो आप क्या उसके जज्बात और क्या एहसासात होंगे, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो वो आई थिंक अल्फाज के अंदर इन चीज़ों को बयान करना जो है वो बहुत मुश्किल है। They
आर लवली पीपल। आई रियली, मुझे तो टर्किश वैसे ही बहुत पसंद है। एक तो वो उनके अंदर आपको एक जो होता है ना ट्रू ब्रदरहुड, जो आप सुनते हैं किताबों में पढ़ते हैं, वो आपको नज़र आता है उनके बुज़ुर्गों में, उनके यंग, उनकी बच्चियों में। यानी कि आप सोचें कि यंग बच्ची यूनिवर्सिटी की 2 बच्चियां हमारे साथ प्लान में साथ हुई और उन्होंने थ्रू आउट हमारे साथ रही। दे वर वॉलंटियर्स। और वो कोई यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी और दूसरी उन्होंने लॉ किया हुआ था अपनी। वो they were young, they just told कि we are student but we are volunteer and we want to help you, and throughout the operation they were there। तो ये जो उधर एक था, और फिर वो इतना पाकिस्तानियों के साथ एक प्यार, इतना मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिलीव मी कि हमारे झंडे को चूमना, जिस वक्त हम अब वापसी पे अपने टेंट्स उनको दे दिए, क्योंकि वहाँ पे टेंट्स की उस वक्त शॉर्टेज थी। और फिर जब एयरपोर्ट पे हम क्यू में लगे तो एक फ़ीमेल एयरपोर्ट पे आके वो मेरे गले लगे एंड शी वाज जस्ट स्टार्ट वीपिंग। तो मैंने गेस किया, बिकॉज़ मुझे तो टर्किश नहीं आती थी, तो उन्होंने मतलब ये ग्रैटिट्यूड और शुक्रिया का जो लफ्ज़ अरबी में बोला, जिससे ये समझ आ रही थी कि आप हैं जिन्होंने हमारा इतना, हालांकि उसके हो सकता है डायरेक्टली कोई लोग अफेक्ट ना हुए हों, बट उन्हें ये पता था कि ये टीम अपनी उसके बगैर देखें कि हमारी मदद के लिए आई है। तो वो एयरपोर्ट पे जाओ या जिस तरफ जाओ, टर्किश आर लवली पीपल, मतलब अनडाउटेडली वो, अगर उनको पता, आई होप कि बाकी कंट्रीज़ के साथ भी उनका ऐसा होगा, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ है, मैं सोच रही थी कि हर बंदे के अंदर ये भाईचारा कैसे है। तो देन वी टॉक विद मैनी पीपल एंड फाउंड के उन्हें तो ये लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। वहाँ पे कुछ सेरेमनीज़ होती है जिसमें उनका झंडा भी हमारे झंडे के साथ दोनों लहराए जाते हैं। तो वो उनकी जनरेशन्स के अंदर ये चीज़ इनकलकेट हुई है, जो कि एक नज़र आती है। आपका बच्चा जब स्कूल से यूनिवर्सिटी पहुंचता है ना, तो हम तो ट्रैफिक लॉज और चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट करते हुए एक अरसा लगा देते हैं, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ कि किस कंट्री ने हमारी क्या हेल्प की थी या मुसलमानों ने कैसे हेल्प की थी, वो उन लोगों को पता है और वो बहुत रिगार्ड करते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। और टर्किश आर लवली एट ऑल, मतलब मैं आपको इस उनके जज्बात, वो जैसे एक अकीदत के होते हैं ना, उसको मैं यंग, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती वहाँ के मेल्स को देख के, आपको कोई फीलिंग नहीं होती कि आप इनसिक्योर हैं। यू आर 100% सिक्योर देयर, और वो आपका रिगार्ड करेंगे, आपके लिए वो बिल्कुल मेहमान नवाजी के लिए 10 स्टेप आगे जाएंगे। सब कुछ उनका तबाह और बर्बाद हुआ हुआ है, इवन दे विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दे आर वेरी लवली पीपल। जिंदगियाँ बची लोगों की, जब वो जिनको उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं शायद हम यहाँ से ज़िंदा निकल भी सकेंगे या नहीं, वो लोग बाहर निकले। और जो उनके साथ फिर था, और चूँकि तुर्की के साथ हमारा ख़ास तौर पर पाकिस्तान का एक बहुत पुरानी एसोसिएशन है, तो ये जो फीलिंग्स थी वो बहुत म्यूचुअल थी उनकी भी, और इसलिए उन्होंने रिस्पेक्ट भी दिया। फिर टर्की के जो स्पेशली प्रेसिडेंट हैं ऑफ टर्की, उन्होंने फिर हमें स्पेशली टीम को भी एक्नॉलेज किया और हमें भी अवार्ड स्पेशली जो है वो दिया, प्रेसिडेंशियल अवार्ड टर्की का। तो इट वाज एन सो उन चीज़ों के लिए, बट उससे भी ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम उस अपने ब्रादर जो वहाँ के लोग हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए हम खुसूसी तौर पे उनके काम आ सके, उनकी मुसीबत में उनकी हम जाके हेल्प कर सके, हम वहाँ पे ज़िंदगियाँ बचा सके। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन थी कि कल को जिस तरह वो हमेशा हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहें, और यही एसोसिएशन हमेशा कायम रहनी चाहिए।
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ायक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea, बहुत बढ़िया." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आगे में। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. लाहौर के शाह आलम चौक में एक ऐसी मस्जिद वाक़या है जिसे एक रात में तामीर किया गया था। इस मस्जिद के इतनी कलील वक्त में तामीर की वजह और वाक़या भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज है। इस मस्जिद के बारे में इल्लामा इकबाल ने यह शेर मौजू किया था, मस्जिद तो बना दी शब भर में इमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तारीख बताती है कि अंग्रेजों के दौर में इस मकाम से एक मुसाफिर का गुजर हुआ और उसने यहाँ नमाज अदा की, जबकि ये इलाका इस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। हिंदुओं को ये बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने हंगामा राई शुरू कर दी। मामला जब अदालत तक जा पहुंचा और वहां हिंदुओं का मौक़िफ़ था कि इस जगह पर मंदिर तामीर होगा, जबकि मुसलमान यहाँ मस्जिद तामीर करना चाहते थे। इस मौका पर मुसलमानों के वकील ने इन्हें तजवीज़ दी कि अगर वो यहाँ सुबह फजर से पहले मस्जिद तामीर कर लेते हैं तो केस का फैसला इनके हक में हो जाएगा। ये सुनना था कि मुसलमानों ने गामा पहलवान की क़यादत में रातों रात मस्जिद तामीर करने का फैसला किया और जिस मुसलमान के पास जो सामान था इसने वो मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दिया। यहाँ तक कि ख़वातीन रात भर अपने सरों पर पानी रख कर लाती रहीं ताकि मस्जिद की तामीर मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने के बाद अदालत ने भी मुसलमानों के हक में फैसला सुना दिया। ये मस्जिद 1917 में तामीर की गई और इसका नाम मस्जिद शब्बर रखा गया। ये मस्जिद 3 मरला के रकबा पर तामीर है। दर्ज वाला कथा तो इस रवायत पर मबनी है जो सीना बसीना चलती आ रही है और ज़बान ज़दे आम है, यानी हर एक ने ज़ेब दास्तान के लिए हस्बे ज़रूरत इसमें इजाफा किया। असल मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। नकूश लाहौर नंबर में इस मस्जिद की तामीर का मामला कुछ इस तरह दर्ज है। दा में यहाँ पर एक कच्चा सा चबूतरा था जिस पर लोग नमाज पढ़ा करते थे। इसके करीब ही हिंदुओं का एक मंदिर तामीर हुआ। मुसलमानों को मस्जिद पुख्ता करने का ख्याल आया तो हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम फसाद के पेश नज़र इसकी इजाज़त न दी। मई 1922 में एक रोज पुरजोश नौजवानों ने आपस में मशवरा करके रात रात में यहाँ मस्जिद खड़ी कर दी। वो इशा की नमाज के बाद काम पर लगे और फजर की नमाज के बाद फारिग हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1917 की बात है कि यहाँ से एक मुसलमान का गुज़र हुआ। उसने यहाँ पे नमाज अदा कर दी कि जो सारा इलाका था हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। तो हिंदुओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान ने हमारे इलाके में आके नमाज क्यों अदा की है।
और वो इसमें यानी मुसलमान का नमाज़ पढ़ना बर्दाश्त हुआ, हिंदू ये कहने लगे हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। और जब मुसलमानों को पता चला कि हिंदुओं का सिर्फ एक मुसलमान का नमाज़ पढ़ना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और सिर्फ इस बात के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, तो मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में जो है ना तनाज़ा शुरू हो गया। लड़ाई होते होते बात उस वक्त की अदालत तक चली गई। तो उस वक्त की अदालत के जो जज साहब हैं उनने कहा कि मैं सुबह जगह का मुआयना करके फिर उसके बाद इसके हक़ में फ़ैसला दूँगा। तो जब सुबह जज ने मुआयने के लिए आना था तो मुसलमानों के जो वकील थे उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि अगर आप रातों रात इस मस्जिद को तामीर कर दें तो हो सकता है ये फ़ैसला आपके हक़ में हो जाए। तो मुसलमानों ने जो आपस में मशावरत की और मशावरत करने के बाद जो है ना फिर उनने ये तय किया कि हम गामा पहलवान से दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और अगर वो हमारी सरपरस्ती करें तो हम एक रात में मस्जिद बना सकते हैं। तो हिंदुओं की चूँकि यहाँ पे अक्सरियत थी, उनका जो है ना लड़ाई झगड़े का भी खौफ था, ख़दशा था कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो फिर जब गामा पहलवान के पास मुसलमानों के जो है ना एक वफ़द गया और उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमारी सरपरस्ती करें, हमारी निगरानी करें तो हम जो है ना यहाँ पे एक मस्जिद बनाना चाहते हैं और सुबह इस तरह जज ने आना है और फ़ैसला होना है इसके हक़ में। तो उस गामा पहलवान ने ये कहा कि जो है ना उन्हें जो है ना हामी भर ली और जो है ना वो तशरीफ़ ले आए और वो शालमी चौक में आके वो बैठे और जो है ना बहुत सारे मुसलमान फिर इकट्ठे हुए तो उन्होंने मस्जिद को तामीर करना शुरू कर दिया। और जब सुबह फजर की नमाज अज़ान का टाइम था तो उस वक़्त तक जो है ना मस्जिद को मुकम्मल तामीर कर लिया गया था। तो फिर जब नमाज हो रही थी तो उस वक्त जो है ना हिंदू आए तो हिंदुओं ने देखा कि ये तो पहले से तामीर शुदा इमारत मौजूद है और मुसलमान तो यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। तो इस तरह हिंदुओं ने एक दूसरे को इकट्ठा करके बुलाया हुआ था। कुछ हिंदू तो ये देख के ही वापस चले गए कि भाई ये तो पहले से तामीर शुदा इमारत मौजूद है, मुसलमान नमाज भी अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने दूसरे हिंदुओं से जो लोग थे उनसे कहा कि भाई आपने हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया। तो वो आपस में यानी उनको ये कहकर वापस चले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद जज आया तो जज ने फिर आके क्या देखा कि ये इमारत पहले से तामीर शुदा है, तो जज ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। उस वक्त ये कानून होता था कि कोई भी मजहबी इबादतगाह अगर पहले से तामीर शुदा है तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। तो फिर जब अल्लामा इकबाल को पता चला कि मुसलमानों ने एक रात में मस्जिद तामीर कर दी है तो फिर अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है कि बरसों में नमाजी बन ना सका। और इस मस्जिद को जो है ना 1917 में बनी, फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको रिपेयर किया जाता रहता है। 1354 हिजरी में इसको दोबारा रिपेयर किया गया। फिर तीसरी बार 2007 में इसके जो लेंटर थे वो पोसीदा हो गए थे और इसको जो है ना फिर 2007 में मेरे सामने जो है ना इसको फिर दोबारा रिपेयर तीसरी बार रिपेयर किया गया। इसी तरह जो वक्तन मस्जिद का जो काम निकलता रहता है तो वो काम होता रहता है। और इस मस्जिद को आज भी जो है ना लोग जो है ना दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे नमाज़ पढ़ना एक सादत समझते हैं। और अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि एक रात में मुसलमानों ने कैसी मस्जिद को तामीर किया। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि जिन्नात ने शायद तामीर की हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगरचे अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो ये तो बहुत छोटी सी इमारत थी। बहुत बड़ी बड़ी और बुलंद इमारतें भी अल्लाह ताला की मदद से बनाई जा सकती हैं। साढ़े बड़े दसते ने हिंदुस्तान जो पाकिस्तान बनया सी ना तो उस तो पहले तो यह मस्जिद तैयार हुई है तो एक रात च तैयार हुई सी। जी ना मस्जिद ना तैयार होंदी तो इत्थे मंदिर तैयार होना सी। समझ लो मुसलमानों का जज्बा सी, औरतों का बंदियां का जज्बे के नाल तो एक रात तैयार हुई है। सुबह फजर की नमाज हुई इत्थे तो हाली तक उस तरह ही कायम चलती आ रही है। तो इत्थे बहुत दुनिया आती है जी मस्जिद के बारे पुछते हैं तो फोटोआं लाते हैं, हर एक हिस्टरी पुछते हैं पिछली। पहले मिट्टी की तैयार हुई सी, उस बाद फिर पत्थर लगा। मेरा नाम फराज नकवी है। मैं यहाँ पे ऑफिस के काम आया था तो साथ ही मिज़ान बैंक है।
तो ये मस्जिद थी, मैं बड़ा सुना था इनके बारे कि ये मस्जिद मतलब एक रात में बनी है, तो बड़ी क़ीदत थी मुझे कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट टाइम ये नमाज़ पढ़ी है इस मस्जिद में। हम पहले ना जज्बा कुछ और होता था, पहले मुसलमान थे वो उनका जज्बा और था, आज भी वैसा ही आ रहा है। माशाल्लाह अच्छी मस्जिद है, मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी हूँ। सर मेरा नाम समीउल्लाह है, मैं बाजोड़ के रिहायशी हूँ। तकरीबन 2010-11 से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो इस नमाज में माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने आता हूँ, कारी साहब जानते हैं हमें, तो हमें बहुत सुकून महसूस होती है जब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आते हैं। जो मुसलमानों का उस टाइम का जज्बा है और आज का जज्बा है, तो अंदाजे मुताबिक मुझे लगता है कि आज भी ज़िंदा है वो वाला। ये एक रात का मस्जिद है, तो उस टाइम तो हम थे नहीं, लेकिन सुना है कि यार एक रात में बना हुआ है मस्जिद, तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो बहुत सुकून महसूस होता है। अक्सर मैं काम करता हूँ बार होता तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस मस्जिद में पहुँचूँ, यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँ, तो बहुत खुशी महसूस होती है सर, बहुत सुकून महसूस होता है। मेरा नाम एजाज़ अहमद है जी, मैं यहाँ पे तकरीबन 1970 से दुकान कर रहा हूँ। और ये शब्बर की मस्जिद जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पापी पुराना था बरसों नवाजी बन ना सका। बहरहाल ये मस्जिद बहुत पुरानी है और उसका सामने ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये मोती मंदिर है, इंदिरा गांधी के दादा का नेहरू का मंदिर था। और मस्जिद जो थी वो इसके मुकाबले में बनी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मस्जिद नहीं है, तो रातों रात ही तकरीबन 24 घंटों में ये मस्जिद तैयार हो गई थी। पाकिस्तान बनने से पहले की मस्जिद है ये। और अब आज आपने भी देख लिया है, और मस्जिद उसी हालत में जैसे पुरानी पहले थी वैसी की वैसी मस्जिद आज भी वैसी की वैसी ही है। यहाँ पे उस वक़्त मुसलमानों को हुकूमत नहीं थी, हिंदुओं की हुकूमत थी। यहाँ पे ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मंदिर था, और मंदिर के सामने जो है ना जगह थी एक, वहाँ पे अपना गामा पहलवान था। और यहाँ से कहते थे कि मस्जिद जब बनाई गई है ना रात को शुरू की है 4 बजे इशा के बाद शुरू हुई है, और सुबह अज़ानों के फजर की नमाज जब हुई है ना तो मस्जिद तैयार हो गई थी। लोहारी यहाँ से लेके ना तो अपना दिल्ली दरवाजे तक ईंटों की लाइन लगी हुई थी लोगों की, उन्होंने पत्थर ला के एकदम मतलब रातों रात मस्जिद बनाई थी ये। और एक रात में ये मस्जिद सुबह उन्होंने मुआयना करना था, अंग्रेज़ ने आकर मुआयना करना था, डाला ने आकर मुआयना करना था कि ये मस्जिद यहाँ पे जगह है कि नहीं। सुबह आई तो देखा तो हाँ मस्जिद की जगह मौजूद थी, मस्जिद बनी हुई थी उस वक्त। उसने फिर डिक्लेयर किया था कि हाँ मस्जिद ठीक है, मस्जिद की जगह ठीक है। मेरा नाम जी शहजाद अब्दुल हमीद है जी, और मैं अंदरून लाहौर का रहने वाला हूँ, रैशी हूँ, जद्दी पुश्ती लोग हैं, हम इधर के रहने वाले। तो ये जो मस्जिद है आप इसके बारे में मैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे बाप दादा ने जो बताया, ये एक तारीख़ी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा तारीख़ी मस्जिद है। असल में ये जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, सारे लोग ये इकट्ठे थे, तो उस वक्त ये मुसलमानों ने कहा कि ये मस्जिद है, हिंदू कहते थे ये मंदिर है। तो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अल्लामा इकबाल साहब थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, वो वकील थे। तो उन लोगों की मुशावरत से और लोगों की मुशावरत की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये सुबह आकर देखेंगे ये क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, क्या सिलसिला है। तो मुसलमानों में आपको पता ही है क्या जज्बा होता है। ये आपने जब इस्लाम की बात पे आता है तो वो अल्लाह के हुक्म से फिर और बन जाता है मसला। तो फिर लोगों ने यकदम अल्लाह की मदद से एक रात में खड़ी हो गई थी। ये तरीक़ी बात है, ये भी ये मस्जिद शब्बर एक रात वाली मशहूर है पूरी वर्ल्ड में। इधर से बड़े बड़े सयाह आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। मैं इधर मेरा काम है ये कबाड़ वगैरह का, तो मुझे 25 साल से ऊपर हो गए चौंक में, 25 साल से ऊपर मुझे हो गए। तो बाप दादा ने बताया, तारीख ने बताया, ये एक तरीक़ी मस्जिद है, अल्लाह पाक की दी हुई एक नेमत है। तो खुदा की मदद से उस वक़्त के लोगों ने ईमान था, जज्बा था, उस वजह से ये एक रात में तमीर हो गई है। इस वजह से इसको एक मस्जिद शब्बर अल मशहूर एक रात वाली मस्जिद शालमी चौक कहते हैं। मट्टी और गारे का दौर था, वो मट्टी और गारे के ज़रिए उन्होंने
ये इसको तमीर कर दिया अल्लाह पाक की रहमत से, नबी पाक के सदके। तो ये ना मतलब कि खड़ी हो गई। सुबह आके देखा जब गवर्नमेंट ने, तो ये मस्जिद थी, फजर के अज़ान इन्होंने दे दी मुसलमानों ने। तो जैसे हिंदू पहले सोए रहे थे, उस वक्त भी अल्लाह के हुक्म से वे सोए हुए थे। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। तमाम तरीफ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालू की, जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, रहमान है, रहीम है, कुद्दूस है, इज़्ज़तें अता करने वाला है, रिज़्क़ अता करने वाला है और हमारी शारक से ज़्यादा करीब है। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मोहतरम नूर मुजस्सम शफ़ील मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात पर, जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, ख़ातमुन नबिय्यीन है और हमारी जानों से हमसे ज़्यादा हक़ रखती हैं। अल कुरान के साथ आपका मेज़बान आबिद हुसैन मुस्तफ़ाई आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद नसीहतों का ज़िक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालू का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाने के बाद
ईमान की खूबसूरत दौलत अता फरमाई। अहले ईमान की ये पहचान है कि वो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अहकाम की मुकम्मल तौर पर पैरवी करते हैं और जहाँ भी उन्हें हुक्म और फरमान मिलता है वहाँ सरे खम तस्लीम करते हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मुकामात पर सहाबा कराम की सवालों पर नसीहतें फरमाई हैं और बाज़ जगहों पर आपने बतौर नसीहत उन्हें फरमाई हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हमें हदीस मिलती है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रवायत करते हैं। कहने लगे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, या गुलाम, ए लड़के, ए नौजवान, इन्नी उअल्लिमुका कलिमाती, मैं तुम्हें चंद कलिमात सिखाता हूँ, चंद नसीहतें करता हूँ। आफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, पहली नसीहत मेरे आका ने फरमाया कि तुम अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हालांकि अल्लाह ताला तो पूरी कायनात की हिफाजत करने वाला है। इससे मुराद कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात हैं जो अल्लाह ताला की फ़रामीन हैं, जो अल्लाह के फ़राइज़ हैं, जो इंसान के ऊपर लागू कर रखे हैं, उनकी मुकम्मल हिफाजत करना यानी फर्माबरदारी बजा लाना। और दूसरा मुराद ये भी है कि अपने दिल में हमेशा अल्लाह को याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद को अपने कल्बे खाना के अंदर आबाद रखना और मामूर रखना। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर भी इरशाद फरमाया है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मेरा जिक्र करो और मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, मेरी नाशुक्री ना करो। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हदीस मिलती है, हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा मुझे पुकारता है, मेरा जिक्र करता है, फ़इन ज़करानी फ़ी नफ्सिही, अकेले में तन्हाई में उसके पास कोई भी नहीं बैठा हुआ तो वो मुझे याद करता है, तो मैं भी उसको वैसे ही याद करता हूँ, तन्हाई में, अकेले में। और अगर वो मुझे पुकारता है, मुझे याद करता है, मेरा जिक्र करता है मजलिस के अंदर, तो मैं उससे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता हूँ। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालू का अंदाज़ है मोहब्बत का भी और ज़िक्र करने का भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम अपने दिल में अल्लाह की याद को आबाद करो, यानी अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा। दूसरी नसीहत मेरे आका ने फरमाया कि आफ़ज़िल्लाह ताजिदहु तुजाहदु, फरमाया कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब जब याद करोगे तो अल्लाह को अपने सामने पाओगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे बहुत करीब है। अल्लाह को अपने करीब समझो। जब भी कुछ मांगना हो, तलब करना हो, तो वो कहती हैं कि दिल की आईना में है तस्वीर यार, ज़रा सी गर्दन झुकाई और देख ली। इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु करीब है। कुरान पाक के अंदर भी और हदीस के अंदर भी वाज़ेह आता है कि शाह रग से भी ज़्यादा करीब है। जहाँ इंसान सांस लेता है उससे भी ज़्यादा अल्लाह करीब है। जब अल्लाह तबारक व तआला को अपने बहुत ज़्यादा करीब समझोगे तो यकीनन वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब होगा। फिर जब करीब होगा तो जो भी इल्तिजा करना चाहो बआसानी तुम कर सकते हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी इसकी वजाहत कुछ यूँ फरमाई है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, फरमाया कि हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं लेकिन तुम्हें ही नज़र नहीं आता। तीसरी नसीहत मेरे आका ने फरमाया कि इज़ा सअलता फ़स्अलिल्लाह, बस जब भी तुम मांगो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही मांगो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालू से तलब करो। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया कि तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट गया है तो वो भी अल्लाह की बारगाह से तलब करो, अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जल्द फरियाद सुनने वाला है और तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब है। चौथी नसीहत आपने फरमाई कि व इज़स्तअनता फ़स्तईन बिल्लाह, तो जब भी तुम्हें कोई मदद चाहनी हो
तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े हो तो तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालू से ही मदद तलब करो। फिर मेरे आका ने वजाहत फरमाते हुए फरमाया है कि अगर पूरी दुनिया सारे लोग तुम्हें नफ़ा देना चाहें तो तुम्हें नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, हाँ जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिखा है। और अगर पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, और अगर अल्लाह के यहाँ तुझे नुकसान पहुंचाना ना हो तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की एक मोहब्बत का भी अंदाज़ है और अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्ब होने का भी अंदाज़ हमें मिलता है। मिशकातुल मसाबी के अंदर 5174 नंबर हदीस हमें मिलती है बड़े खूबसूरत अंदाज में। मेरे आका ने फरमाया इग़तनिम खमसा क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। शबाबा का क़ब्ल हरामिक, फरमाया कि जवानी है उसको बढ़ापे आने से पहले गनीमत जानो। अब कुव्वत है जवानी के अंदर, ज़ाहिर बात है इबादत बंदा बासानी कर लेता है, तिलावत करना चाहे बहुत ज़्यादा भी कर सकता है। इसी तरह अगर किसी की खिदमत खल्क करना चाहे तो वो भी आसानी से कर सकता है। बहुत सारी इबादत है जो जवानी में इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में कर सकता है। पूरी रात क़याम करना चाहे कर सकता है, रोज़ा रखना चाहे रख सकता है। अगर वो दीन को तलब करने के लिए इल्म हासिल करना चाहे तो आसानी कर सकता है। तो इससे पहले कि वो चीज़ आ जाए जो उस जवानी को ख़त्म कर दे, यानी बुढ़ापा आ जाए, तो फिर तुम्हारे लिए वो जो तुम्हारी तलब है, जो तुम्हारी तड़प है, अगर तुम इबादत करना चाहो भी तो बुढ़ापे की वजह से कुव्वत नहीं होगी तो तुम इबादत नहीं कर सकोगे। गई जवानी आया बुढ़ापा, जाग पइयां सब पीड़ा, होन किस्म कम मोहम्मद बख्शिया, सौंफ जवाइन हरेड़ा, यानी कि फिर कोई खुराक भी काम नहीं आती है। तो इस लिहाज से अगर जवानी है, कुव्वत है, पावर है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई नौजवान है उससे कोई गुनाह सरजद हो गया है तो अगर नौजवान तौबा करता है और पक्की तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श भी झूम जाता है और अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है। और मेरे आका ने यह भी फरमाया कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और अल्लाह का महबूब वो बंदा भी है जो जवान है, गुनाह कर बैठा है और तौबा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में आता है, तौबा करता है तो अल्लाह का महबूब बन जाता है। फिर मेरे आका ने फरमाया सेहता का कबला साकामिक, फरमाया कि सेहत है, तंदुरुस्ती है, और सेहत तो हज़ार नेमत होती है, ये तुम्हारे पास है उससे पहले कि कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए जो इंसान के जिस्म को लाग़िर कर दे, उससे पहले तुम सेहत को गनीमत समझ लो। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी दौलत है। जिनके पास सेहत नहीं है उनसे पूछिए कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, और इसके साथ इंसान के जो आज़ा हैं अगर उनमें से भी कोई एक चीज़ मायूब हो जाए, यानी आँख ज़ाइल हो जाए, कान की समात कम हो जाए, या नाक में प्रॉब्लम हो, इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं बीमारी लायक हो जाए, तो इंसान की ज़िंदगी उस तरह खुशहाल नहीं हो पाती जिस तरह वो सेहत की ज़िंदगी में होती है। तो इस एतबार से सेहत को भी गनीमत समझना चाहिए। व गिना का कबला फ़क्रिक, मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास गिना है, तुम्हारे पास मालूम मता है, तुम्हारे पास आसाइश हैं, उसको गनीमत मान जानो, उससे पहले कि तुम्हारे पास कोई फ़क्र आ जाए, फ़कीरी आ जाए, कमज़ोरी आ जाए, या दुनिया का माल जो है उसमें कमी आ जाए, जब तू कुछ करना चाहता है, यानी कि दौलत इंसान के पास होती है तो ज़कात देता है, अजर मिलता है, दौलत होती है तो बंदा उम्र और हज करता है, उससे भी अजर मिलता है। तो और दौलत हो तो लोगों की खिदमत खल्क अच्छे अंदाज में कर सकता है, लोगों की खिदमत कर सकता है। तो अगर तुम्हारे पास है तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, और इससे पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ फिर तुम्हारे दिल में आए काश मेरे पास अगर इतने पैसे होते या इतना माल होता तो मैं ऐसे खर्च करता। तो उससे पहले अगर तुम्हारे पास है, गनी हो, आसाइशें हैं, तो उसको गनीमत जानो और उसका तसर्रुफ अच्छे तरीके से करो, यानी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करो।
I'm Robin Ashby. I'm a city councillor. I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबारे को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
फिर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इंसान जो है वो अक्सर करता है कि माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, तो अपने माल की रट लगाए रखता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में फरमाता है कि तेरा माल कोई चीज़ तुम्हारा माल नहीं है, हाँ तेरा माल वो है जिसको तूने खाया है और वो सीधा कर दिया है, जिसको तूने पहना है और उसको वो सीधा कर दिया है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब तू जाएगा तो तुम्हारे जितने भी वारसा होंगे वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा माल वो है जिसका तूने खुद यूज़ किया है या तुमने फिर आगे सदका कर दिया है, वो तुम्हारे लिए फ़ायदा देगा, उसके अलावा कोई चीज़ भी फ़ायदा नहीं देगी। हम देखते हैं सिकंदर जुल्करनैन एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, आधी दुनिया से ज़्यादा हुकूमत करने वाले। जब वो दुनिया से रुखसत होने लगे तो लोगों को कहा कि जब मैं इंतकाल कर जाऊँ तो मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना और लोगों को दिखाना कि इतना बड़ा बादशाह है लेकिन खाली हाथ जा रहा है। तो इस एतबार से भी अगर गिना है, कुव्वत दौलत है, तो उसका इस्तेमाल अच्छे अंदाज में किया जाए ताकि उस दौलत से तुम्हें बाद में भी फ़ायदा होता रहे। और वो बेहतरीन तरीका है कि अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता रहे। चौथे नंबर पर मेरे आका ने फरमाया कि फराग का कबला शुगली का। मेरे आका ने फरमाया कि फरागत को गनीमत जानो उससे पहले कि तुम मशगूल हो जाओ, मसरूफियत तुम्हारी बढ़ जाओ। अब तुम अगर फ्री हो अल्लाह का जिक्र कर लो, अगर तुम फ्री हो खिदमत खल्क कर लो, अगर तुम फ्री हो तो तुम अल्लाह की एक कुर्बत हासिल कर लो उससे पहले कि तुम मसरूफ़ हो जाओ। तो एक हदीस में यह भी मिलती है कि जो फरागत में अल्लाह को याद नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको दुनिया के कामों में लगा देता है, फिर वो इतना मशगूल होता है कि उसके पास टाइम ही नहीं मिलता। बहुत सारे हजरात हमें मिलते हैं, उनको कहते हैं भाई नमाज पढ़ा करो, क्या करूँ, काम बहुत ज़्यादा है, बड़ी जिम्मेदारी है, नमाज का टाइम नहीं मिलता है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, हदीस समझने और पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब ने पहले फरमा दिया कि तुम अगर मसरूफ़ नहीं हो, फारिग हो, तो उस लम्हात को गनीमत जानो और अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लो। 5वें नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व हयात का कब्ल अल मौतिक, हयात है, ज़िंदगी है, तो इसको गनीमत जानो उससे पहले कि मौत आ जाए। तो मेरे आका ने फरमाया कि ज़िंदगी जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी दी है, इंसान बनाया, ईमानदार बनाया है, यानी मोमिन बनाया है, मुसलमान बनाया है, तो इसको गनीमत जानो। क़यामत के रोज़ कुछ लोग होंगे जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे काश हमें दोबारा लुटा दिया जाए दुनिया में, हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, हम इबादत पे गुजारेंगे, दिन रात तेरी आगे तस्बीहात करेंगे, सजदे में पड़े रहेंगे, सर हम तस्लीम करेंगे। उस वक़्त ये पुकारेंगे। तो इस वक़्त अब अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी को गनीमत जानो। मेरे आका ने ये फरमाया कि ये जो ज़िंदगी है, ये जो हयात है, ये तुम्हारे लिए आखिरत के लिए बतौर खेती है। जितना बोलोगे, जितना करोगे अच्छा अमल, वो क़यामत के दिन अच्छा पाओगे। तो इस एतबार से भी ज़िंदगी को गनीमत जाना चाहिए उससे पहले कि मौत करीब आ जाए या मौत आ जाए। देखें, जानवर अपने मालिक को कभी नहीं भूलता और हमेशा उसकी पैरवी भी करता है, फर्माबरदारी भी करता है। एक दफ़ा अगर लुकमा खिला दिया जाए तो वह सारी ज़िंदगी उसके ताबेदारी में गुजार देता है। लेकिन इंसान जिसकी हर सांस अल्लाह की दी हुई है, लेकिन इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि वो अशरफुल मखलूक़ात है, वो अल्लाह अपने मालिक को याद नहीं रखता। एक बादशाह था जिसने एक जंगला बना रखा था और कुत्ते रखे हुए थे। अगर कोई भी आदमी ऐसी बात करता जो बादशाह को पसंद नहीं होती, वो फ़ौरन उस जंगले में डालता और उसको वो कुत्ते चीर फाड़ देते, यानी ख़त्म कर देते और उसका तमाशा भी देखता। वज़ीर एक था उसका, बड़ा ही ज़हीन था। उसने कहा कि मेरा भी वक़्त करीब है और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अगर कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई जो बादशाह को पसंद नहीं है तो मेरा भी हाल ऐसा होगा। उसने दरबान से कहा जो उस कुत्तों की रखवाली करता था
उसको कहा कि यह चंद दिन के लिए मुझे इसकी खुराक देने दीजिए, मैं कुत्तों का ख्याल करना चाहूँगा। कहा कि वज़ीर हैं आप, आपको तो बड़ा मर्तबा है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? कहा छोड़ो, आप इसके बदले में मुझसे कुछ ले लो। यानी कि कुछ दिन वो उनको खिलाता पिलाता रहा। उसके बाद एक ऐसी वक़्त आया, बादशाह को उसकी बात पसंद ना आई और उसने वैसा अमल किया जैसा दूसरे लोगों के साथ किया जाता था, यानी कुत्तों के आगे छोड़ दिया जाता और वो उसको चीर फाड़ते और उसका तमाशा देखता उसकी मौत का। जब वज़ीर को उसके अंदर डाला गया तो देखा और कुत्ते सामने आए तो कुत्तों ने उनके पाँव को चाटना शुरू कर दिया। बादशाह हैरान हुआ कि ये क्या मामला हो गया है। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, इतनी साल मैंने तेरी खिदमत की है और एक बात तुझे अच्छी नहीं लगी है और तूने मेरी ये हालत कर दी है और इनको चंद दिन मैंने लुकमे डाले हैं और आज मेरी कैसे पाँव के आगे चाट रही हैं। तो यही हमें देखने हैं, एक जानवर जिनको चंद लुकमे खुराक दी जाए तो वो उसकी पैरवी करते हैं और उसकी फर्माबरदारी में लग जाते हैं। और इंसान जिसको अल्लाह ताला हमेशा खिलाता पिलाता रहता है और उसके ऊपर अपनी मेहरबानियाँ करता रहता है, लेकिन इंसान अपने खालिक का नाशुक्रा बन जाता है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, 2512 नंबर हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर दो खसलतें पैदा हो जाएं, दो खूबियां पैदा हो जाएं, अल्लाह उसको नाम शाकिर और साबिर में रख देता है। उसकी खसलत नंबर 1 यह है कि अगर वो दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले बंदे को देखे, यानी जो आलिम है, जो फाजिल है, जो कुरान को सही मानों में समझता है, हदीस को समझता है, फ़िक़्ह को समझता है, इसी तरह दीनी मामलात में बहुत ऊपर है, तो उससे उसके तरफ रुझान करे। और दूसरी बात यह है कि उसके दिल में अगर दुनियावी मामलात में है तो अपने से नीचे वाले बंदे को देखे। अगर यह चीज़ देखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो साबिर और शाकिर कहलाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को समझाने के तौर पर एक खूबसूरत अंदाज़ अपनाया है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारे अहल व अयाल, तुम्हारा माल और तुम्हारे आमाल किस मिसल हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स है और वो करीबुल मौत है, यानी उसको मौत करीब है, उसके करीब आने वाली है, वो बहुत सख्त बीमार है। उसके पास उसके 3 भाई बैठे हुए हैं। एक भाई को कहता है कि तुम मेरे साथ क्या मामला करेगा? तो वो कहेगा कि मैं तेरा ख्याल करूँगा, तेरी तीमारदारी करूँगा, अगर दुनिया से रुखसत हो जाता है तो तेरे लिए कफन दफन करूँगा, तेरा जनाजा उठाऊँगा, तुझे तदफीन करूँगा और उसके बाद मैं घर आ जाऊँगा। अगर तेरे बारे में कोई पूछेगा तो तेरी तारीफ़ कर दूँगा। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इसकी तो कोई ख़ास बात हमें नज़र नहीं आई। तो दूसरे से सवाल किया कि तुम मेरे लिए क्या करेगा? दूसरे ने कहा, जब तक तू जिंदा है तुझे फ़ायदा दूंगा, जैसे तू दुनिया से रुखसत होगा तेरा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। सहाबा इकराम ने उस पर कहा कि इसका तो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है। तीसरे भाई से पूछा कि तू क्या करेगा? कहा कि मैं तेरी तीमारदारी भी करूँगा, तेरा तदफीन तक जाऊँगा, यहाँ तक कि तेरी कब्र तक जाऊँगा, यहाँ तक कि मैशर के मैदान में भी अगर तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने मीज़ान में बैठकर तेरे आमाल को वज़नी करूँगा और तुझे जन्नत तक पहुँचा के आऊँगा। तो साहबा ने कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये तो सबसे बेस्ट आदमी है, बेस्ट भाई है, बड़ा अच्छा भाई है। तो फरमाया कि जो पहले वाले हैं वो तुम्हारे अहल व अयाल हैं, जो दूसरे हैं वो तुम्हारा माल है और तीसरे तुम्हारे आमाल हैं। तो इस पे हमें देखना चाहिए कि कल को हमें जो काम आए, कब्र में जो हमारे काम आए, और उस वक़्त जब हम सबसे ज़्यादा मुश्किल में हों उस वक़्त हमारे काम आए, वो हमारे अपने ज़ाती आमाल हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह जो हमें नसीहतें फरमाती हैं उस पर अमल करके आगे पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा है। गरीब अवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से अवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए। बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ एक गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी, कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। The history of astrology and tarot cards is almost 2000 years old. Since the inception of mankind, man is in continuous search of heavenly bodies. Many of the astrologers chart the position of the stars in the sky to gain insight into human personality and even draw predictions about the future. देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कदीम इल्म रखता है और
आप देखें कि तारीख़ के दुराहों को लें तो यहूदी जो है इस इल्म को जो है वो बहुत मानते थे और मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस आती होती थी। राहब जो है इसके ऊपर बड़ा यकीन रखते होते थे और यहूदियों में बाज़ तो देखा गया है कि ये एस्ट्रोलॉजी को जो है वो अपने मज़हब का हिस्सा भी समझते हैं, उसको लेके चलते हैं। देखिए जिस तरह मुख्तलिफ सितारों की अगर बात करते हैं, सियारा ज़ोहल है, जुपिटर है, तो ये 12 सितारे हैं या 9 सियारे हैं। ये जो सियारा है ये अल्लाह ताला की मखलूक है और ये एक रूह है। हर सितारे की अपनी एक रूह होती है और वो जो रूह है वो हर बंदे के साथ एक डीलिंग करती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर दाऊद हूँ तो मेरे ऊपर अगर सियारा मुश्तरी का असर है तो वो सियारा मुश्तरी जो मेरे साथ डीलिंग करता है वो अपनी रूह के मुताबिक करता है या उसका मेरे करैक्टर के साथ क्या तल्लक है उसके मुताबिक उसकी ऊंच नीच होती है। There are many astrologers around us. Some of them are experienced in their fields, while others do not demonstrate their effectiveness in controlled studies and has no scientific validity, which proves them pseudoscience. यहीं तो एक मसला पैदा होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर एक तरीके बदाई से बेहतरीन प्रिडिक्शन नहीं कर पाता। उसको करने के लिए मुख्तलिफ अलूमात का सहारा लेना पड़ता है। उसको किन अलूमात का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि मैं अगर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी से उसके तरीक़ बदाई से उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसका वक्त तो ले लूँगा, उसका सियारा तो पता कर लूँगा, मगर मुझे उसका नाम पता होना चाहिए। मैं उसके नाम से न्यूमरोलॉजी से इल्म जफ़र एक बहुत बड़ा इल्म है, उससे मैं उसका इल्मुल अदाद से उसका नाम निकालूंगा, उसकी वालदा का नाम निकालूंगा। तो मैं इन तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन से उसको न्यूमरोलॉजी से देखता हूँ कि इसकी जो पैदाइश है उस वक्त सितारा कौन सा था, इसके वालदा के असरात इसके ऊपर कैसे आए, इसकी अपनी शख्सियत कैसी है। A masterstroke like Alan Leo, father of astrology, godmother of future telling Baba Vanga, and Evangeline Adam have amazed the world by making many prophecies and prognostication. But there is still a blank space of deep understanding of the basic knowledge of astrology. The point to ponder is from where concept of astrology begins and on what basis do they make these prophecies. बेसिकली तो ये जो इल्म है ये बुज़ुर्गों से वदीयत होता है और बुज़ुर्ग इसका बड़ा फ़ायदा उठाते थे। इस ही इल्म को उठाकर लोगों ने इसको साइंस की तरफ लेके आए। हकीकतन ये अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतों का, बहुत ज़्यादा पावर्स का मालिक बनाया। वो इंसान ही है जो अपनी ताकत के ज़ोर पर जो है वो 7 समुंदर पार के जो है मामलात को देख पाता है। मेरे सामने एक तस्वीर चल पड़ती है उस बंदे की, उसका करैक्टर चल पड़ता है। वो किस तरह का करैक्टर है, वो करैक्टर मेरे दिल पर जो है वदीयत होता है और कुछ उसके लिए मैंने तपस्या, इबादत और पढ़ाइयाँ, ज़िक्र अज़कार मुख्तलिफ किए हैं और ख़ासकर बुज़ुर्गों की अता है मेरे साथ। It is believed that all the stars in our galaxy lighten a strong knowledge, and this divine knowledge influences the life of every individual, but it is still a mystery. This point actually forces to think that how a life of an ordinary person can be affected by a star which is billions miles away from this existing life zone. देखें सितारों में ताकत किस तरह होती है। एक बंदे का सियारा मुश्तरी शरफ़े जो है शरफ़ में है और एक का मुश्तरी जो है वो ज़वाल में है। जो शरफ़ का मकाम है वहाँ पे आकर आपको मुख्तलिफ इबादतें, तपस्या और अपने वजद से और अपनी अंदर की ताकत से या बुज़ुर्गों की ताकत से ऐसे अमाल करने पड़ते हैं जिससे वो ताकत आपकी बढ़ जाती है। वो ताकत किस तरह की होती है? वो ताकत आपको दूसरों से मुनफरद करती है। वो ताकत आपको दूसरों से ऐसी शक्ति और ऐसी पावर लेके आती है जिससे आप लोगों की जो जिस तरह बवशा या उसकी जो है उसका मुकद्दर, उसकी तकदीर और उसके ऊपर वो आप उसको पढ़ सकते हो। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي
Ghosts are creatures about whom everyone has listened some stories, and every holy book has mentioned about it. There are many movies on ghosts in multiple languages. That mean we believe that ghosts exist. But when it comes to how to control them or how to save humans from these creatures, we consider it a trickery. जिन्नात की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, अच्छे और बुरे। अच्छों में अब हम ये कह सकते हैं मुसलमान भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं जो अच्छे हैं, और बुरों में मुकम्मल तौर पर बुरे वो हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, यानी इस जहान के बनाने वाले को नहीं मानते। वो जो हैं वो जिन्नात, उनको बुरे जिन्नात में शुमार किया जाता है। उनके बारे में कहानियाँ घड़ी जाती हैं कि वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब इन जो बुरे इंसानों में जो नुकसान पहुंचाते हैं वो उनको नाम दिया जाता है शयातीन का। असल में वो शैतान नहीं है, वो जिन्नों की ही अम्मार की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन शैतान जो है वो उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। The presence of ghosts is mentioned in all 4 holy books. There come several queries about the existence of ghosts. How much power does a ghost have? Or how ancient is this creature? Or how do they communicate with them? Where do they live? वो इंसानी जहाँ ज़िंदगी जहाँ तक है, कितने फीट ऊपर, मसलन जब मीटर से हिसाब लगा लें तो 4 किलोमीटर ऊपर तक इंसान सांस ले सकता है, उसके बाद उसकी सांस दुश्वार हो जाती है। उससे ऊपर उनका आलम है। फिर इस ज़मीन से आउट भी कहीं तक भी जा सकते हैं, ज़मीन की हदूद से बाहर भी जा सकते हैं। उन्हें मूव करने के लिए, किसी ट्रैवल करने के लिए किसी सवारी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो शफ़ाफ़ है। शफ़ाफ़ से मुराद कोई मादी जिस्म नहीं है उनका जिसको टच करें, पकड़ सकें, मसलन उससे कोई जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर सकें, जैसा मशहूर है दुनिया में। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। In Quran, Surah Jinn, Allah Almighty clearly indicate the presence of ghosts. Also, what kind of powers do they have, and to which extent these ghosts are related to the ordinary man? सहाबी जिन ज़िंदा मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में, बल्कि हज़रत ईसा के सहाबी भी मौजूद हैं। उनमें से एक जनाब ज़ाफ़र जिन है जो बहुत मशहूर है, और मुख्तलिफ़ किताबों में उनके तज़किरे हैं। करबला के मैदान में भी जनाब ज़ाफ़र जिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए थे। देखा कि उनके सामने बहुत बड़ा लश्कर है और ये मुख्तसर से अफराद हैं और उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमारी जो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, हम अगर अल्लाह हमें इजाज़त दे, यानी अगर आप कहें तो हम एक्स्ट्रा पावर से आपको मदद मुहैया कर देंगे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मैंने आपसे पहले कहा कि जिन्नात नुकसान और फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, तो वो कैसे नुकसान पहुँचाते? In Surah Imran, verse number 185, it is stated that every soul will taste the death. This is also mentioned in all holy books. In the same way, the ghosts have age, and probably a day of resurrection will be fixed for their judgment. जिन्नात के नॉर्मल उम्र जो है इस कैटेगरी की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो औसत उम्र उनकी 1500 साल है, 2000 तक भी जाती है, 2500 साल तक भी जाती है। जो इनसे बड़ी किस्म है उनकी लाखों साल है, जैसे जो शैतान है, जैसे इफरीत है, उनकी बहुत ज़्यादा एज है, यानी उनकी ज़िंदगियाँ लंबी है। जो जिन जिन्नात के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इस दुनिया में इंसान के साथ अल्लाह ने उन्हें इबादत पर मामूर किया है, वो जिन्नात जो है उनकी औसत उम्र
1500 साल है। वैसे कुछ जिन्नात के बारे में मालूम हुआ है 2500 साल यानी 2500 साल 2600 साल भी उनकी एज रही है। यानी इस वक्त बहुत से जिन्नात मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम का दौरानिया देखा। बहुत से जिन्नात ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने हज़रत ईसा का दौरानिया देखा, यानी हज़रत ईसा से मिले हैं, अभी भी ज़िंदा हैं। रहते कहाँ जो आपने पूछा, माज़रत, इनकी रहाइश जो है वो इस ज़मीन पे नहीं है। इनकी रहाइश का हिस्सा जो है वो इंसानी ज़िंदगी जहाँ तक है, यानी इंसान जहाँ तक सांस इजीली ले सकता है उससे ऊपर है। और ये शफ़ाफ़ मखलूक है। हम इंसान बने हैं मिट्टी से, जैसे हम कहते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं है। हमारे पूरे वजूद में कहीं मिट्टी नहीं है। We have heard the stories of the ghosts, that they have been roaming around for many years. It is assumed that all the ghosts not only have same nature. Some of these ghosts will be rulers and some will be subjected, which means there will be different types of ghosts. जनाब जाफ़र जिन ये लगभग 80-90 साल पहले तक तो ज़िंदा थे। उनके मुख्तलिफ़ अफराद से कांटेक्ट था। जब उनकी डेथ हुई तो बड़ा मशहूर हुआ दुनिया में, मुतअद्दिद ममालिक में उनके लिए मजालिस रखी गई। बड़े बड़े उलमा ने, हमारे शियों में चूँकि राइज है, कोई मरता है तो उसके लिए मजलिस रखी जाती है। When a man tries to communicate or contact other creatures of the world, specifically ghosts, it is necessary that an individual must exclude all the wishful thinking and purify its souls like a divine soul. Also diminishes all its attachments with the world, and this way communicate between humans and ghosts can be possible. देखें, मेरा कांटेक्ट किसी दुनियावी नीयत से नहीं है। मैं नॉलेज का आदमी हूँ, पढ़ाई का आदमी हूँ, किताबों का आदमी हूँ। तो मुझे हिस्ट्री के जो मिसिंग पार्ट होते हैं उनके ज़रिए, उनके सिलसिले में मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। कोई अपनी विश के लिए, कोई और दिगर ज़रूरत के लिए नहीं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है।
और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ा है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
Hello and welcome again to Yesterday, Today and Tomorrow with Robin Ashby here on South Asia Global TV. I'm going to reflect on the history of Russia since 1900 through the lives of 5 notable women. The 20th century was one of tumult for the people of the Russian Empire, which became the Soviet Empire and is now Russia again. Its autocratic Tsar was executed and replaced by autocratic Soviets, mainly led by old men, and now an autocratic pretend democrat who seems to be trying to recreate the old empire. Through that time, the courage and talent of individual women shone through the darkness in the Russian soul. These are some of their stories. Nadia and the Night Witches. Nobody knows the exact date when they started calling us night witches. We were bombing the German positions every night, so the Germans began to say, "These are night witches," because it seemed impossible to kill us or shoot us down. So recalled Senior Lieutenant Serafima Amazoma Tarenko. In 1942, the Soviet Union was throwing everything into the fight to defend itself against Hitler's Germany, including its women. By GKO Order 0099, 3 regiments of women pilots, known as Aviation Group 122, were formed. These were the 588th Night Bombers, 587th Dive Bombers and 586 Yak Fighters regiments, under the command of Marina Raskova, a famous aviatrix. The bomb loader and the mechanic crews of the 588th were also all women. The 588th flew an old training biplane, the Polikarpov U-2 or PO-2, which carried no defensive weapons and was highly flammable. Its top speed was 94 miles an hour, that's 150 kilometers an hour, and it's less than the stall speed of the principal Nazi fighters, the Messerschmitt 109 and the Focke-Wulf FW-190. The pilots were able to turn this to their advantage by exploiting the plane's fantastic maneuverability and by the extraordinary disregard for personal safety. The Me-109, trying to intercept, would be frustrated by the PO-2 turning at a slower speed but with greater agility than it could manage, forcing it to make a wide pass and come in for another attempt to meet exactly the same tactic. On harassment bombing raids behind enemy lines, the canvas wings seemed to absorb radar, while the small 110 horsepower engine failed to register with infrared heat sensors. But it was noisy, so the pilots cut their engines and glided in over their unsuspecting targets. With its payload of only 2 small bombs, there was no margin for wastage. The only warning the Axis troops had of their approach was the wind whooshing through the wind tension wires as the PO-2 was upon them. Of negligible strategic value, these raids had a considerable psychological effect on their enemy. Their troops were the targets. They were hunkered down in encampments, supply depots, trying to rest between combat. The Germans called them Nachthexen, night witches, and they swooping in from a silent sky on their fantastical broomsticks. An Iron Cross was offered for each one downed. At Stalingrad, the Germans created what the Russians called a flak circus. Searchlights and flak guns, hidden by day, were brought out and positioned in concentric circles. In the linear flight path typical of untrained Russian flyers, the planes were shredded. But the 588th, flying in formations of 3, sent in the first 2 to fix the attention of the guns. These 2 would split off in opposite directions and try to evade the fire. The 3rd would sneak by undetected, drop her bombs and rejoin the others, while another of the original 2 would peel off to target. The Night Witches earned more than 20 Heroes of the Soviet Union medals and many Orders of the Red Banner, and participated in the final onslaught on Berlin. By the end of the war, most surviving pilots had chalked up nearly 1,000 combat missions. Former pilot Nadia Popov, who rode 18 sorties in one night, looked up into the cold night sky many years later and asked herself, "How did you do that, Nadia?"
It's me, Jia. This is my Street Vibes. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं।
Polina the politician. Pearl Solomova-Karpovskaya was born on February the 5th, 1897, in the Zaporizhia Oblast, in what's now Ukraine, in the former Russian Empire, to a Jewish family. Her father Solomon was a tailor. She met Vyacheslav Molotov during their university years in St. Petersburg. Molotov, or sledgehammer, was the nom de guerre of the sort which many revolutionaries adopted. Lenin was a man of steel, Stalin the man of iron. Throughout her political career, Polina used her nom de guerre of Comrade Semchuzina, or Pearl, but I'll just call her Polina. She and Molotov shared principal political ideologies and became closely involved in the Bolshevik movement, which would eventually lead to the Russian Revolution in 1917. She joined the Russian Social Democrat Labour Party of Bolsheviks in 1918 and served as a propaganda commissar in the Red Army during the Russian Civil War. After the revolution, Molotov rose through the ranks of the Communist Party, becoming one of Stalin's most trusted allies, serving as Prime Minister and Foreign Minister. They married in 1920. Polina, known for her intelligence and dedication to the communist cause, and to Stalin personally, also forged her career. She was the director of the Soviet National Cosmetics Trust from 1932 to 36, Minister, they call them People's Commissar of Fisheries in 1939, and head of textiles production in the Ministry of Light Industry from 1939 to 1948. During the 1930s, when Stalin's purges were at their height, Polina and her husband were deeply entrenched in the inner circle of power. The Molotovs had two daughters, Sonia, who was adopted in 1929, and Svetlana, born in 1930. They shared an apartment with Stalin's family. Polina and Stalin's wife Nadezhda Aliyeva became close friends. In November 1932, Polina followed Nadezhda out of the dining room after Stalin had publicly chastised his wife in the company of friends. The next morning, she was found dead by suicide, having shot herself with a small Walther PP pistol. This event is believed to have fueled a secret hatred of Polina by Stalin, who urged Molotov to divorce her. Despite his permanent subservience to Stalin, he refused to do so. During the dangers posed by Stalin's paranoia and the arbitrary nature of the purges, they managed to navigate the treacherous political landscape relatively unscathed. In the party, she was elected as a candidate member of the Central Committee in 1939. But in a secret meeting of the Politburo on the 10th of August 1939, of which Molotov was a member, the agenda number item 33, regarding Comrade Semchuzina and her alleged connection to spies, led to a request to verify that information by the NKVD secret police. As was customary during the Great Purges, many of her co-workers were arrested and questioned. But the evidence, mainly acquired by force against her, was so contradictory that on the 24th of October, the Politburo concluded the allegations against the comrades' participation in sabotage and spying are to be considered slanderous. However, she was severely reprimanded and demoted for unknowingly keeping contact with enemy elements, thereby facilitating their spying missions. In 1941, she was taken off the list of candidates for the Central Committee. Polina was arrested for treason in December 1948, consequently being forced into an unwanted divorce from Molotov, who seems not to have protested against her arrest. She was convicted and sentenced to 5 years in a labour camp. Despite what had happened during the Nazis' genocides, especially of Jews, Stalin had a streak of anti-Semitism. It may have contributed to his death from an untreated stroke in 1953 because an alleged doctor's plot had removed the Jewish doctor who might have saved him. Immediately afterwards, she was released from captivity by Beria, the head of the secret police, who was bidding for ultimate power, and reunited with her husband. Her first question upon her release was, "How's Stalin?" Upon being told that he died a few days earlier, she fainted. Molotov was briefly rehabilitated, but then dismissed by the post-Stalin regime.
She and her husband were not actively involved in politics again, and they lived out the remaining years in relative obscurity in Moscow. She died in 1970. Valentina the cosmonaut. Valentina Vladimirovna Tereshkova was born on March 6, 1937, in the small village of Maslenikovo in western Russia. The daughter of factory workers, she was the first woman to go into space and a place in history. During the Cold War, an intense competition between the United States and the Union broke out. Major Yuri Gagarin had stunned the world when he became the first human to orbit the Earth. This sparked existential fear in the USA and a race between the two superpowers to achieve even greater feats of space exploration. In 1961, US President John F. Kennedy stood before Congress and proposed that the US should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to Earth. In one of his inspirational speeches, his rallying cry was, "We choose to go to the moon in this decade and do other things, not because they're easy, but because they're hard. Because that goal will serve to organise and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and we intend to win, and the others too." It was against this backdrop that the most unlikely future cosmonaut, Valentina, a textile worker and amateur parachutist, was selected from a pool of over 400 candidates to join the Soviet space program. On June 16, 1963, she embarked on her historic mission aboard the Vostok 6 spacecraft, becoming the first woman to fly in space. Her journey was uncomfortable as she grappled with weightlessness, cramped conditions, and the inherent dangers of space travel. For 3 days, she orbited the Earth 48 times, covering a distance of more than 70 million kilometers. 20 years and 2 days later, America sent its first woman into space. Valentina married cosmonaut Andrei Nikolaevich 9 months after her safe return at the Moscow wedding palace. Soviet leader Khrushchev presided at the wedding party together with top government and space program leaders. The marriage was encouraged or ordered by the Soviet space authorities as a fairy tale mission to the country. The head of the USSR space program described it as probably useful for politics and science. On 8th of June 1964, nearly 1 year after a space flight, she gave birth to their daughter Elena, the first person whose parents had both travelled in space. In the 1970s, they were divorced. In the years following her divorce, Valentina served the USSR as an ambassador for space exploration, travelling widely to promote scientific cooperation and international understanding. She retired from the Soviet Air Force as a Major General. She also pursued a career in politics, serving as a member of the Soviet Parliament and later, following the implosion of the USSR, the Russian Duma, where she advocated for the advancement of science and technology, and she is still a member. Aged 86, she's currently sanctioned by the USA for her support of Russia's invasion of Ukraine.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. Should not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. Galena the dancer, the goddess of dance,
Arguably the greatest ballerina of the 20th century was Galina Ulanova. The composer Serge Prokofiev said of her, "She is the genius of Russian ballet, its elusive soul, its inspired poetry. In classical roles, Ulanova reaches a depth of expression unprecedented in 20th century ballet." A classmate, the first Russian ballerina to visit the US under the Soviets, summed her up thus: "Ulanova is not a phenomenon who appeared out of the blue. Her talents stem from the depths of our Russian culture, our people, and given birth by a fine and harsh century." It was in pre-revolutionary St. Petersburg, where both her parents were involved with ballet, that she once rightly remarked that there was no choice following in their footsteps. Her father took her to her first performance when she was only 4. When she recognised her mother dancing one of the parts in The Sleeping Beauty, she startled the audience by shouting, "That's Mama, my Mama!" Her childhood memories included the revolutionary year of 1917, the summer that the police searched her parents' apartment. But her happier memories were backstage, taken there with her parents when they were scheduled to perform and there was no one to care for her. Her debut was in October 1928 in a performance of the Sleeping Beauty, the same ballet and the same theatre where she shouted out to her mother 14 years earlier. Her mother was present. "Doubly anxious," said Galina, "because as my teacher, she was thoroughly familiar with every difficult movement and with my weak points." She is reported to have covered her face when Galina moved into some of the more difficult portions of her performance as Princess Florina. "My technique was by no means what I could have wished," said Galina. The following year, however, she made her debut in a starring role, Odette Odile in Swan Lake. She professed she was influenced by new ideas of a revolutionary society. Dances were staged now not for the sake of a charming waltz or a galop tune, she said, but for the sake of expressing ideas and emotions. New ballet, aimed at conveying ideas, notably the basic idea of Soviet humanism, the idea of faith in man, his strength, beauty, his will to fight for happiness. After Germany's invasion, she spent many months entertaining troops at the front or performing for those on leave in Moscow and Leningrad. She danced in Moscow at the Bolshoi during the dangerous months of September and October 1941, when German forces threatened to capture the city. A glittering career of performance culminated in her coming to the attention of Stalin, who patronised her and ensured that she was permanently transferred to the Bolshoi in Moscow, becoming prima ballerina. One of the distinguished visitors before whom she performed was the British Prime Minister Winston Churchill. For the rest of her career, she was showered with awards, several of them multiple times. Even in the depths of the Cold War, Galina's talent began to find a foreign audience. She was allowed to dance in Italy in 1951, receiving a tumultuous reception as the Dying Swan in Florence. After Stalin's death in 1953, the political pressures lessened and Galina became the outstanding star of Bolshoi's extensive foreign tours. Her most notable performances abroad came in England in 1956 and the United States in 1959. In these tours, she and other members of the Bolshoi undoubtedly benefited from the novelty of Soviet ballet for a Western audience, as well as the softening political climate. In London, the Bolshoi's impact was said to be as great as the Diaghilev ballet at the start of the century, and Galina, no longer young, had the greatest triumph of all. Acquaintances stressed two features of Ilana's personality. First, her personal shyness. Second, was her fantastic daily application to her art through unending practice. Even among prima ballerinas, whose devotion to unending work is legendary, the star's devotion was seen as beyond the ordinary. In her autobiography, she noted, "Dancing is an art that demands endless, unremitting toil." Her goal, she said, was technical perfection. The public should never notice or suspect that any movements cost the dancer the least strain. Even in retirement as a performer,
Galina remained an active and honoured figure in Russia and abroad. In her role of ballet coach, she accompanied the Bolshoi on tours abroad. Galina Ulanova died on April 25th, 1998 in Moscow after a lengthy illness, aged 88. Boris Yeltsin, the first president of Russia, said of her, "Her life and the art of dance to which she has given her soul has become part of Russian and world culture." Ulanova has always been for us the symbol of conscience, honour and dignity. She is a true artist. Sasha the Protester. The Russian musician, writer and pacifist Sasha Skocilenko was sentenced to 7 years in prison in November 2023 for putting 5 small anti-war messages over price tags on items in a St. Petersburg supermarket in April 22. This was while the Russian army was besieging the city of Mariupol in Ukraine, subsequently reduced to rubble. One message read, "The Russian army bombed an art school in Mariupol where about 400 people were hiding from shelling." Another, "Weekly inflation reached a new high not seen since 1998 because our military actions in Ukraine stopped the war." Although what she said was true, Sasha was charged with spreading knowingly false information about the Russian army motivated by political hatred. New laws have criminalised virtually anything perceived as criticism of the war or Russia's armed forces. Until recently, even the war could not be referred to in Russia as a war, but must be called a special military operation. A guilty verdict was inevitable. She has since been declared a prisoner of conscience by Amnesty International. Paradoxically, Sasha's prosecution gave her a platform to speak against the war and potentially to persuade other Russians to join her in embracing the truth. Sasha Skocilenko was born in 1990, the year before the Soviet Union collapsed and the city of her birth reverted to its historic name of St. Petersburg. As Russia entered a new era, everyone in the country was hoping for change, waiting for democracy and freedom. But unfortunately, there were only small changes, Sasha's mother, Nadezhda, has written. Although often ill as a child, Sasha took pleasure in art, writing poems and organising music jam sessions, her mother said. Even those who never played music could come and play and improvise at any time, she said. It was music, just without notes. But because it was from the heart, everyone loved it. Sasha also wrote short books in graphic form about her depression and bipolar disease. When Russia invaded Ukraine in 2022, Sasha believed she should do everything possible to stop the war, to tell those who do not know the truth about what's happening, her mother says. That's why she decided to make such an action in the store for those people who don't know the truth. While in detention for many months awaiting trial, she suffered bullying and denial of medicines, gluten-free food for celiac disease and access to the toilet. Court sessions were also physically demanding, requiring her to stand and nothing to drink for hours. Yet, the proceedings were also a source of support as friends and strangers rallied to her defence. Her lawyers dismantled the case against her, discrediting prosecution witness testimony. Sasha herself rebutted an element of the charge against her, saying she wanted to stop the war not out of hatred but out of animosity, but out of compassion. In a final statement to the court, Skocilenko said of the state prosecutor, "He believes in a very different truth to me. I would never imprison him for that." To him, she said, "I don't blame you. You're looking out for your career, a stable future to provide for your family." Ultimately, despite facing long imprisonment, Sasha told the judge and the prosecutor, "I am freer than you." Sasha wondered in court how the regime could believe itself threatened by 5 small pieces of paper. An investigator told her lawyer he resigned because "I didn't join the investigative committee to work on cases like the one against Sasha." Prison staff have expressed bafflement. Do they really put people in prison for this now? According to Natalia Arno, the president of the Free Russia Foundation, an organisation of exiles who support democracy and oppose the war in Ukraine, Sasha has become one of the symbols of the anti-war protest movement globally.
She's one of the reasons we are not ashamed to be Russian. With special thanks to Elaine Jude and Tim Berners-Lee, this has been Yesterday, Today and Tomorrow with Robin Ashby. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलाची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है?
किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Pies. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better.
Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. She not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा है। गरीब अवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से अवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ एक गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं, जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है।
तो ये तरबूज आपसे लोग शौक से ख़रीदते हैं। माशाल्लाह शौक से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Well, here we are again, Badge of Honour. I'm Alan Curry. And if you've been watching the previous episodes, you'll have heard me talk about my early life, parental upbringing, how I joined the police service, what some of my inspirations were. And I've been asked to sort of describe a little bit of how I actually managed to get to the rank of Chief Superintendent. I suppose there's your own personal values. I always wanted to challenge myself. If you put the rank structure in place, I joined as a PC, and the ranks I went through were Sergeant, Inspector, Chief Inspector, Superintendent, and Chief Superintendent. And each one of those ranks has different roles and responsibilities, but each one of those can teach you things to allow you to move to the next rank once you've been able to hit a level of competency. And I never wanted to move on till I felt I knew the job that I was doing or competent. So it's always been in myself to want to progress, to want to learn. I still learn now. I always say you never learn it. And of course, I will qualify this by going back to what my father says. Self-praise is no recommendation. So please take what I'm saying with it. This is not, I'm the greatest. It's just what I was, what I am, because in the way we've moved forward. So each one has a different responsibility. As a sergeant, I had 8 people to look after. As an inspector, I had 20. As a chief inspector, I had 100 and odd.
And as I moved forward, I finished off with 500 staff. Now it's really hard to have all those people but each one of the roles and ranks I wanted to achieve competency in, and that really helped me move forward and progress. And I mentioned in an earlier episode that to be a leader, you have to have followers. And there's a certain amount of respect comes from being a leader with followers. And one of the things I always found very interesting, if we are talking about leadership, was I never changed my personality no matter what day I went to work. Like everybody else, I had children, I had a wife, maybe not all things went well at home, but my officers and my staff only ever saw me as Alan Curry, because I felt if they knew how they could work with me and what I could do with them, for them and together, they knew how they could then do the job. So we've worked about the early parts of me doing the job, but I wanted my officers to do the job the way I saw it was done. They were doing my job 20 years ago. They believed in the community, they wanted to help people, they wanted to do the job correctly, and they knew if they did the job correctly that they were always going to get my support. So that's my motivation as I progressed, and my attitude, and probably we've got to go back to family, haven't we? You know, that's what my parents taught me, to be as good as you can be, but not to strive necessarily for money. Money's always a nice sort of aspect to it, but it wasn't the key motivation. It was about personal development. And within that sort of thing, bear in mind I mentioned earlier on that I didn't pass my 11+. I did further education. I taught myself. I read books and I watched others. I've said earlier on, you get good habits taught, but some are caught. And I caught an awful lot of good behaviour from people I worked with and for, and that put me in good stead. So you continually learn. I wanted to learn, I wanted to be ambitious, and then the next step is, I never wanted to be the best. I wanted to be the best person I could be, and I wanted to be the best commander I could be. And if I could be as good as I can be, the people behind could be their best without any hindrance or fear of failure. Everybody, I quite like a book called The 1 Minute Manager, and one of the things he always said, or the writer said, catch people doing things right. It's easy to catch people doing things wrong. That's not a problem. But it's about catching people doing things right, and they always remember it. You know, I said about my father, he never gave me much praise, but I always knew he was proud and praising me. Well, I made sure my staff knew when they'd done a good job, they were spoken to, and I went to see them. I didn't sit in an office, but they were some of the habits I caught of other leaders who I respected and dealt with. And I've got to go back to my final word. Part of me being where I was and what I was from the people I worked with, my own upbringing, my personal style, and my desire to learn and to be as good as I can be. Maybe not the best, but as good as I personally could be. It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place.
Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. I mentioned before the rank structure and how I developed and moved on, hopefully to my standards, but my first promotion was to be a sergeant. Now, it was very unusual for people to get promoted around 5-6 years. I didn't get promoted till 12 years, which was quite late. But I'd been doing my best learning the job, and I got promoted to Jarrow as a sergeant. And now I've got responsibility for the officers, and we had some fine officers there. But not everybody wanted to be a leader. There were some great operators within that community who actually didn't aspire to be a sergeant, an inspector, or moving on. Yes, we always say money would have been nice, but they always were able, the wages were getting better. But some of these individuals, they
they were striving within the role they were doing. They were permanently trying to be the best they could be for the organisation and themselves. And I think one of the things that was noticeable for me being a sergeant, watching those things, because I was striving slightly differently because I wanted to be a sergeant, I wanted to challenge myself in that role. But I also recognised, more than I did when I was part of the team, that some of my members who made the team and who I had responsibility for were actually as good, and in some ways, if not better, than some of the skill set I had. But what they didn't particularly want to do was take on some of the areas or responsibilities of promotion. But those officers were the salt of the earth in relation to the work they did, pillars of community, been in the area for a long time, knew everybody, could walk down the street, and their ambition and desire was to be as good as they could be within that role. So not everybody can be a leader, not everybody can get promoted, but that doesn't diminish the fact of the job that gets done from the perspective of an individual recognising the values and objectives of the organisation, putting their heart and soul in achieving those objectives, and doing it for both the organisation, for themselves, and from that a recognition, because they were recognised, of their worth in the role that they were doing on behalf of the people we were serving. Yet I suppose the message that I learned from being the sergeant was, not everybody's going to be a sergeant, not everybody's going to be an inspector, but a lot of those officers progressed within themselves, within the organisation. They didn't hold rank or responsibility, but they were some of the officers I went to for advice and guidance. So not everybody can be a leader, not everybody wants to be, but that doesn't diminish the fact that some fantastic people do not take on the responsibility or role, they take on that personal responsibility and the organisational objectives and the way in which we can do and help people in the community. Salt of the earth, I love working with them, I learned a lot from them, and you never stop learning. Just because you have responsibility for individuals doesn't mean to say that they can't teach you as well as I could teach them. It's a cross-section of skills, a cross-section of skill sets, but it's how you complement each other to a common goal and objective. And these people were great. I can even think of one individual officer who actually, his part-time job, and not a job, he had a role helping out his disabled mother who had an antique shop, and they called him Jack, so it's not going to mean anything, Jack. Jack could go anywhere in Jarrow. He could do anything, he could talk to anybody, he knew everybody. And he was, we mentioned very early on Dixon Dog Green and people like that. He was your original community police officer who knew everybody. And he'd been at Jarrow for years. And he was one of the most competent officers I've ever met in my service. But he didn't want to be a sergeant. But honestly, if I needed to know anything, or speak about people, or even learn about certain ways to do the job differently, I'd go to Jack. And he'd just say, okay, Alan, have you tried this? Or have you tried that? Back to some of the things I've said. Good habits are taught, but they're also caught. And you can never stop learning from your peers, and you never stop learning from people you work with on a daily basis. And I had as much respect, and always will have respect, for Jack. He was what policing is all about.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. I mentioned Jack there, who had all the skills necessary, but as a sergeant, I had a few because it took me 12 years to be a sergeant. So some of my staff were learning different things. And I remember on one particular occasion, we had a burglary in the Fellside area of Jarrow South Shields. And what I used to do, personally as a PC and definitely as a sergeant, as police officers, we had and probably still have a habit of driving quickly to the scene. If it's a burglary or people have run away, then we end up in a situation where we drive around the streets for a while and then we leave. Maybe 5-10 minutes. And I used to park the Panda up in a dark alley and just sit near the house and just see if anybody popped their head up or did whatever. So that's what I did. The lads had moved on and I just hid the Panda and just walked around. And sure enough, I was sitting in a hedge actually. And this head just popped up, right? And of course, next thing I know, there's a run on. I was quite fit then, so nobody got away when I was chasing them. The only thing was, and I'm never going to be the tallest police officer you meet. And it always seemed to be that I was fighting with big lads. So I'm struggling with this guy as best I could as I'm shouting for help now. I'm hanging on to him for grim death. He hit us in the face. I had a black eye. My uniform was ripped and all the rest of it, but I hung on. And believe it or not, it's the first time I'd heard about odontology. He'd broken into the house, didn't admit anything, but he'd had a bite of cheese in the fridge, and we matched his teeth to the cheese to prove he'd been in the house unlawfully, and obviously he ended up getting convicted of burglary and he got 2 years in prison because he had a list of convictions previously. Now, I go back to be habits caught and taught. My staff watched how that happened. They'd never been shown how to do that previously. And from then on in, we had a method of operating that was from the team again. We'd drive to the situation, we'd drive around, but then I'd always leave 2 officers just sitting in hedges waiting, and we were successful in those sort of things. So that was a great learning process for myself, how to teach people things that they hadn't done because they were younger in service than myself. So I'm learning from the older members, but the younger members are learning from me. And that's back to my little mantra there. Good habits can be taught, but good habits can be caught. And that was a good case for me. Another incident that struck me a little bit, and this is just about how the world moves on. I followed a car with 4 individuals in. They ran away into a block of flats, and I knew we had the concierge, we knew which flat they'd gone into. There was 4 of them. Now I just think, and again, don't forget I'm teaching as well as learning, that you can't run away from the police, because if you do it once, you do it again. So I got 3 officers, a dog handler, and we had a locksmith, and we broke into the flat. And of course, the next thing is, when we go into the front room, there was 20 young people in there. 4 run in fine, but I didn't know the other 16 were there. So now I've got 5 officers, 1 with a dog. And all the big lads always seem to want to fight with me. So I was fighting in a walk-in wardrobe.
and the dog handler came to help and let the dog off, and the dog bit me, right? So I'm now fighting with somebody, the dog's biting me, we've got people all over the place, I'm looking for help. Anyway, one thing led to another, and we got it all sorted and went back to the station. And I spoke to the dog handler, and I said, John, that's not supposed to happen. I shouldn't be getting bit. He told us, he said, the dog's young, he's got to learn. I'll speak to the sergeant tomorrow. Anyway, he came back on night shift. I said, what did the sergeant say? He said he needs a bite. I said, well, he's had a bite of me. But on the same token, he meant a bite of one of the bad lads. Anyway, that same night, we had another intruder's call. We surrounded this small grass area and we arrested the burglar. I went into our custody office at the time, and this lad's standing there with blood on his arms and on his chest, and he wanted to make a complaint. He said he tried to give himself up 3 times. So I went outside, and the dog's sitting next to the dog handler, John, and I said, John, what happened? And he just patted the dog's head and he said, the dog's had his bite. That was another learning issue as well, and another way that we all learned together. Success story, we'd done the job properly, we completed the organisational objectives, and somebody who wanted to commit crime and burglary had been dealt with appropriately. Well, that's me up to my rank of sergeant. Thank you for watching or listening. I believe you're going to see me again in the future. Hopefully I look forward to it and you look forward to it. Thank you. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया।
सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby.
Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mixed some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं।
शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छांव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। The history of astrology and tarot cards is almost 2000 years old. Since the inception of mankind, man is in continuous search of heavenly bodies. Many of the astrologers chart the position of the stars in the sky to gain insight into human personality and even draw predictions about the future. देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कदीम इल्म रखता है और आप देखें कि तारीख़ के दुराहों को लें तो यहूदी जो है इस इल्म को जो है वो बहुत मानते थे और मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस आती होती थी। राहब जो है इसके ऊपर बड़ा यकीन रखते होते थे और यहूदियों में बाज़ तो देखा गया है कि ये एस्ट्रोलॉजी को जो है वो अपने मज़हब का हिस्सा भी समझते हैं, उसको लेके चलते हैं। देखिए, जिस तरह मुख्तलिफ सितारों की अगर बात करते हैं, सियारा ज़ोहल है, जुपिटर है, तो ये 12 सितारे हैं या 9 सियारे हैं। ये जो सियारा है ये अल्लाह ताला की मखलूक है और ये एक रूह है। हर सितारे की अपनी एक रूह होती है और वो जो रूह है वो हर बंदे के साथ एक डीलिंग करती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर दाऊद हूँ तो मेरे ऊपर अगर सियारा मुश्तरी का असर है तो वो सियारा मुश्तरी जो मेरे साथ डीलिंग करता है वो अपनी रूह के मुताबिक करता है या उसका मेरे करैक्टर के साथ क्या तल्लक है उसके मुताबिक उसकी ऊंच नीच होती है। There are many astrologers around us. Some of them are experienced in their fields, while others do not demonstrate their effectiveness in controlled studies and has no scientific validity, which proves them pseudoscience. यहीं तो एक मसला पैदा होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर एक तरीके बदाइश से बेहतरीन प्रिडिक्शन नहीं कर पाता। उसको करने के लिए मुख्तलिफ अलूमात का सहारा लेना पड़ता है। उसको किन अलूमात का सहारा लेना पड़ता है? जैसे कि मैं अगर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी से उसके तारीख बदाइश से उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसका वक्त तो ले लूँगा, उसका सियारा तो पता कर लूँगा, मगर मुझे उसका नाम पता होना चाहिए। मैं उसके नाम से न्यूमरोलॉजी से इल्म जफ़र एक बहुत बड़ा इल्म है, उससे मैं उसका इल्मुल अदा से उसका नाम निकालूंगा, उसकी वालदा का नाम निकालूंगा। तो मैं इन तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन से उसको न्यूमरोलॉजी से देखता हूँ कि इसकी जो पैदाइश है उस वक्त सितारा कौन सा था, इसके वालदा के असरात इसके ऊपर कैसे आए, इसकी अपनी शख्सियत कैसी है। A master stroke like Alan Leo, father of astrology, godmother of future telling Baba Vanga, and Evangeline Adam have amazed the world by making many prophecies and prognostication. But there is still a blank space of deep understanding of the basic knowledge of astrology.
The point to ponder is from where concept of astrology begins and on what basis do they make these prophecies. बेसिकली तो ये जो इल्म है ये बुज़ुर्गों से वदीयत होता है और बुज़ुर्ग इसका बड़ा फ़ायदा उठाते थे। इस ही इल्म को उठाकर लोगों ने इसको साइंस की तरफ लेके आए। हकीकतन ये अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतों का, बहुत ज़्यादा पावर्स का मालिक बनाया। वो इंसान ही है जो अपनी ताकत के ज़ोर पर जो है वो 7 समुंदर पार के जो है मामलात को देख पाता है। मेरे सामने एक तस्वीर चल पड़ती है उस बंदे की, उसका करैक्टर चल पड़ता है। वो किस तरह का करैक्टर है, वो करैक्टर मेरे दिल पर जो है वदीयत होता है और कुछ उसके लिए मैंने तपस्या, इबादत और पढ़ाइयाँ, ज़िक्र अज़कार मुख्तलिफ किए हैं और ख़ासकर बुज़ुर्गों की अता है मेरे साथ। It is believed that all the stars in our galaxy lighten a strong knowledge, and this divine knowledge influences the life of every individual, but it is still a mystery. This point actually forces to think that how a life of an ordinary person can be affected by a star which is billions miles away from this existing life zone. देखें सितारों में ताकत किस तरह होती है। एक बंदे का सितारा मुश्तरी शरफ़े जो है शरफ़ में है और एक का मुश्तरी जो है वो ज़वाल में है। जो शरफ़ का मकाम है वहाँ पे आकर आपको मुख्तलिफ़ इबादतें, तपस्या और अपने वजद से और अपनी अंदर की ताकत से या बुज़ुर्गों की ताकत से ऐसे अमाल करने पड़ते हैं जिससे वो ताकत आपकी बढ़ जाती है। वो ताकत किस तरह की होती है? वो ताकत आपको दूसरों से मुनफरद करती है। वो ताकत आपको दूसरों से ऐसी शक्ति और ऐसी पावर लेके आती है जिससे आप लोगों की जो जिस तरह बवशा या उसकी जो है उसका मुकद्दर, उसकी तकदीर और उसके ऊपर वो आप उसको पढ़ सकते हो। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام Miracle, 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 call me one, call me one, call me one, call. जी कौन? Call me one, call me one, call me one, अभी मरो। call me one. You call me one. Ghosts are creatures about whom everyone has listened some stories and every holy book has mentioned about it. There are many movies on ghosts in multiple languages. That mean we believe that ghosts exist. But when it comes to how to control them or how to save humans from these creatures, we consider it a trickery. जिन्नात की बुनियादी तौर पे 2 किस्में हैं, अच्छे और बुरे। अच्छों में अब हम ये कह सकते हैं मुसलमान भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं जो अच्छे हैं, और बुरों में मुकम्मल तौर पर बुरे वो हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, यानी इस जहान के बनाने वाले को नहीं मानते। वो जो हैं वो जिन्नात, उनको बुरे जिन्नात में शुमार किया जाता है। उनके बारे में कहानियाँ घड़ी जाती हैं कि वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब इन जो बुरे इंसानों में जो नुकसान पहुँचाते हैं वो उनको नाम दिया जाता है शयातीन का। असल में वो शैतान नहीं है, वो जिन्नों की ही अम्मार की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन शैतान जो है वो उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। The presence of ghosts is mentioned in all 4 holy books.
There come several queries about the existence of ghosts. How much power does a ghost have? Or how ancient is this creature? Or how do they communicate with them? Where do they live? वो इंसानी जहाँ ज़िंदगी जहाँ तक है कितने फीट ऊपर मसलन जब मीटर से हिसाब लगा लें तो 4 किलोमीटर ऊपर तक इंसान सांस ले सकता है, उसके बाद उसकी सांस दुश्वार हो जाती है, उससे ऊपर उनका आलम है। फिर इस ज़मीन से आउट भी कहीं तक भी जा सकते हैं, ज़मीन की हदूद से बाहर भी जा सकते हैं। उन्हें मूव करने के लिए किसी ट्रैवल करने के लिए किसी सवारी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो शफ़ाफ़ है। शफ़ाफ़ से मुराद कोई मादी जिस्म नहीं है उनका जिसको टच करें, पकड़ सकें, मसलन उससे कोई जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर सकें जैसा मशहूर है दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। In Quran, Surah Jinn, Allah Almighty clearly indicate the presence of ghosts. Also, what kind of powers do they have and to which extent these ghosts are related to the ordinary man? सहाबी जिन ज़िंदा मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में, बल्कि हज़रत ईसा के सहाबी भी मौजूद हैं। उनमें से एक जनाब ज़ाफ़र जिन है जो बहुत मशहूर है और मुख्तलिफ़ किताबों में उनके तज़किरे हैं। करबला के मैदान में भी जनाब ज़ाफ़र जिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए थे। देखा कि उनके सामने बहुत बड़ा लश्कर है और ये मुख्तसर से अफराद हैं और उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमारी जो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, हम अगर अल्लाह हमें इजाज़त दे, यानी अगर आप कहें तो हम एक्स्ट्रा पावर से आपको मदद मुहैया कर देंगे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मैंने आपसे पहले कहा कि जिन्नात नुकसान और फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, तो वो कैसे नुकसान पहुँचाते? In Surah Imran, verse number 185, it is stated that every soul will taste the death. This is also mentioned in all holy books. In the same way, the ghosts have age and probably a day of resurrection will be fixed for their judgment. जिन्नात के नॉर्मल उम्र जो है इस कैटेगरी की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो औसत उम्र उनकी 1500 साल है, 2000 तक भी जाती है, 2500 साल तक भी जाती है। जो इनसे बड़ी किस्म है उनकी लाखों साल है, जैसे जो शैतान है, जैसे इफरीत है, उनकी बहुत ज़्यादा एज है, यानी उनकी ज़िंदगियाँ लंबी है। जो जिन जिन्नात के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इस दुनिया में इंसान के साथ अल्लाह ने उन्हें इबादत पर मामूर किया है, वो जिन्नात जो हैं उनकी औसत उम्र 1500 साल है। वैसे कुछ जिन्नात के बारे में मालूम हुआ है 2500 साल, यानी 2500 साल 2600 साल भी उनकी एज रही है। यानी इस वक्त बहुत से जिन्नात मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम का दौरानिया देखा, बहुत से जिन्नात ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने हज़रत ईसा का दौरानिया देखा, यानी हज़रत ईसा से मिले हैं, अभी भी ज़िंदा हैं। रहते कहाँ जो आपने पूछा, माजरत, इनकी रहाइश जो है वो इस ज़मीन पे नहीं है। इनकी रहाइश का हिस्सा जो है वो इंसानी ज़िंदगी जहाँ तक है, यानी इंसान जहाँ तक सांस इजीली ले सकता है, उससे ऊपर है। और ये शफ़ाफ़ मखलूक है। हम इंसान बने हैं मिट्टी से, जैसे हम कहते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं है, हमारे पूरे वजूद में कहीं मिट्टी नहीं है। We have heard the stories of the ghosts, that they have been roaming around for many years. It is assumed that all the ghosts not only have same nature. Some of these ghosts will be rulers and some will be subjected, which means there will be different types of ghosts. जनाब ज़ाफ़र जिन ये लगभग 80-90 साल पहले तक तो ज़िंदा थे, उनके मुख्तलिफ़ अफराद से कांटेक्ट था। जब उनकी डेथ हुई तो बड़ा मशहूर हुआ दुनिया में, मुतअद्दिद ममालिक में उनके लिए मजालिस रखी गई। बड़े बड़े उलमा ने, हमारे शियों में चूँकि राइज है, कोई मरता है तो उसके लिए मजलिस रखी जाती है। When a man tries to communicate or contact other creatures of the world, specifically ghosts, it is necessary that an individual must exclude all the visual thinking and purify its souls like a divine soul. Also diminishes all its attachments with the world, and this way communicate between humans and ghosts can be possible. देखें, मेरा कांटेक्ट किसी
दुनियावी नीयत से नहीं है। मैं नॉलेज का आदमी हूँ, पढ़ाई का आदमी हूँ, किताबों का आदमी हूँ, तो मुझे हिस्ट्री के जो मिसिंग पार्ट होते हैं उनके ज़रिए उनके सिलसिले में मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, कोई अपनी विश के लिए, कोई और दिगर ज़रूरत के लिए नहीं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, bahut vadiya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के ख़िलाफ़
हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। Hello, Terence South again, speaking in the line of duty. We've moved now from the Falklands, conflicts, Northern Ireland, and we're out of the army and you're on your own, taking jobs on, basically contracting wherever they come, because confidence really, and what the armies give you to be able to sort problems out. So I was invited to a one-year post in China for the building of the Guangzhou and the Ring Road. That was a real good project. So we're building an elevated road in the middle of a Chinese city with all the problems that comes with it. So what came with it was, I wasn't the first guy to run the job. I was the second guy. So I was following on from someone else who wasn't a military guy, wasn't disciplined in the same way. And so as soon as I got there, it's like, I need to change things. And the problem with developing cultures is they learn one way to do things and that's it. Change management, not an easy thing. There's a lot of things to be learned about change management, and the cultural aspect is one thing that was absolutely massive, because the way you would do it in the UK is not necessarily the way you would do it in China or in Japan. I've known guys from companies like Ford who've worked in Japan, they've worked in Korea, they've set out factories, multi-million-pound projects up, and they come to China and it's like, start again. I started again when I went to Korea, I'll start again when I come to China, and they've got to learn about the culture, and one way to learn about the culture is learn the language. And that was one thing I was adamant about, and that to understand those people and be able to communicate, you need to speak the language, or at least understand it. Because believe it or not, you might be the most senior engineer in the world, but you are not in control if you have an interpreter. The interpreter is in control, because how they interpret things is to their benefit, not necessarily the project's benefit. And I'll give my analogy now. When I worked in Russia in about 96, 97, we had an interpreter called Sergey. And it was a case of, Sergey, on a weekend, we want all the materials brought to site. We move the traffic management, and that makes everything aligned. We don't want to move the traffic management and the materials arrive. We want it all to happen at one time, so we don't have materials in the middle of the road. You can imagine if you've got cars here, you fix the road, you're going to move the cars there tomorrow, and you've got all your material here, you've got to lug it all across. It's no good. So
nothing ever happened on time. And I couldn't understand it. I've told you, and this wagon's late. And one day we had a guy who could speak a little English, and he told us, well, what's your problem? I've delivered it as required. No, we wanted it yesterday. No, today. So we went to Sergey. Well, yeah. And he waffled, he went on and on and on. And then I was sat in a meeting in the UK, and this man's being paid by the day. So if he makes the project last longer, he benefits. But the company lose absolute thousands, while he makes a few more rubles. Absolutely ridiculous. You must have someone who understands the local culture and the local language and on your side. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए। बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम
गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. And that's for one, but you've got to be able to speak the language yourself, even if you've got that. That just speeds things up. You can throw out, this is what I want, blah, 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 and they put the full stops and the commas in and put it right. Because that was one problem. The guy was an interpreter, he's paid by the day, we paid on the project, what a lump price. He was wasting, he was throwing our money away. We were hemorrhaging money because of it. But we had to sort that out. So that's one thing about learning the language. And the other thing is that I'm in China, I've done the Guangzhou in the Ring Road, we've gone in there, we've done really well, we've gone and done Guangzhou in Donglu. Job's finished, I'm speaking Chinese, I moved to another job up in Nanjing. So I get to be a regular in Shanghai, and this guy just pulls me one day. Terence, you speak Chinese? Yep. I'll give you a job for one day. Sorry, what do you want us to do? So I want you to come and listen in one of my meetings and be my friend. So yeah, I'll do that. I'll send a car to pick you up. Okay. So I needed to go to the inner city airport for to get picked up. So in the inner city airport with a bag, this guy thought I'd go off a plane, but I hadn't. So I get picked up. This is my friend Terence. He's just flown in. We've been friends for years. He's looking at setting a company up in China, and he's just sitting here to see how interpreters work and things work. At my age, late 50s, it was unexpected that this man would speak or understand Chinese, because it's very much the young people that took it on. And so I'm sat there and conversations going on, and he's taking a floor in a building, and what he's doing is he is organising it, and he's putting where he's putting the desks, how much furniture do we need, where does he need the fire escapes, where does he need all these things.
and the plan's there, it's all been priced, it's all done. And he throws a spanner in the works in the last meeting and he says, I'd like a door here so we can shortcut through there if needed. Oh, and so I've got the builder, I've got the interpreter, I've got me sat there. So, no. And then I hears from the interpreter, how much do I get for that? What's my percentage? How much are you going to charge him? I want more than that. What? So I'm just listening, dumb old man. Sat there, yeah. Ooh. Well, comes out of the meeting, everybody disappears into their office, and I says, oh, thank you very much for your time, I'm off. Oh, right, I'll see you about. And he's like, what? I'll see you later. Goes out, gives him a text, I need to meet you at the pub. So I met him in the same pub, it was a Banana Leaf in the middle of Shanghai. Yeah, what do you want? What's up? I said, I can't talk about it in the office. I said, but your interpreter is actually stealing from you. What? No, she's been with the company years. He says, look, I'm telling you, this is what was said. She asked the contractor what percentage I get. She said, I want more than that. Oh, no, this is negotiation. No, mate. This is what was said. You've paid me to interpret. That's it. Oh, okay. I said, I'm adamant. That is what was said. I said, it's not local language. This is Mandarin. It's okay, Terence. So anyway, he disappears back to his office in Australia. And I get another call from a guy who'd been in that office a lot of years before. Terence, you've said this. Yeah. I think you're right. Wow. Yeah, we got costings. They went up and up and up, blah, blah, blah. So I just got left out of it. The lady who actually was responsible was found to have a very wealthy lifestyle, well above what she could afford and her husband could afford. So working in foreign countries and doing things and learning the language is a whole sort of learning process. You've really got to be aware of who your friends are. You've really got to be careful with that. People who befriend you, always keep your wits about you, because a number of times I've been and I've listened to what's being said and it's not what was translated. So it's difficult. It is. But China is absolutely terrific place to live. And as an older man, during those years, I got a lot of respect, basically because of my age and because of the fact that I'd learnt the language. And that's one of the problems where you get culture now. Culture comes into it where you've got one child in a family quite spoiled, yeah, because the parents dote on it, and then they do everything to help them. And you've got this ability to talk to people, and when you've got these young people coming in, some of the jobs you give them, they feel that they're below them because they've been to university, they've got a degree, but they've got no life experience and they've got no knowledge of how your industry works. They have a degree which says basically you have the tools to start in this industry, but you need to find out how it works and gain some experience. And I'll give you a story in that we were building these parts for bridges, and we fabricated them, and before very long we were copied. And so it's right, get out the market, what's the strategy? I said the strategy is dump that part in the market, we go into making and assembling and we send them abroad. We leave the Chinese market alone, other than the really big kit. Yeah, let's go with that. It's a route out of the problem we've got. Because now we're in an overcrowded marketplace, we can't get our price. Our price has got to drop, which we're not going to do. But the Chinese have come in and our prices, hey, yeah, their price used to be there. They've copied some of what we do. Their price is now just below us. And they're saying it's the same thing. Right, okay, bang, we left the market. So anyway, time goes on, we start making modular things. They go to Germany, they go to Turkey, they go to Russia, they go all
all over Europe. And we've got the business model now sorted. And that was my job for the company I went to work for. Resolve the problems in the factory with regards to quality and help us with the business plan. So did that. So I'm there for 3 years. I'm coming towards the end of year 2.5. And I've got this in place. We're modularising. We've left the Chinese market alone. There's a huge earthquake in the west of China. You've got bridges collapsing, you've got buildings falling down, you've got a lot of things happening that should never have happened because poor quality, copied, didn't fully understand the engineering behind this piece that we used to make. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
So the government comes in and says, right, we now need you to do this because the ones that's got your pieces in haven't had the same results and fall down and etc. And it's like, no, we're out of that market. We're finished. So what I'm saying is, when you go into developing markets as a Western company, you will be copied. But the full technology, they don't understand. We had some seams in the steelwork that we just put a nice little weld along the top, which actually was only there to keep the water out, so the thing became watertight. But what the Chinese had done is they'd fully welded it and said, isn't ours better than theirs? Theirs is only little, ours is huge. But ours was there, so when an earthquake come, everything snapped and it just broke up. And you could put the thing back together. But the Chinese didn't. They kept the whole of the structure bonded together, and the structure fell over instead of all the bits going, right, now you can put them back together, and you get the safety traffic across a bridge, across a structure, we can make it work again, and we don't have these huge costs in rebuilding. So copying is really dangerous, and it's something when you come into business plans and developing countries, you've really got to be aware of. And so with experience like that, I ended up being poached from there before the end of the 3 years. My job was done, everything was running. The most expensive thing at the end of the day in that Chinese factory was me. The factory was running, there was no problems, it was time to get rid of me. And when I made this public, I ended up working, being poached by an international company and asked to go out to Mongolia to work. And so it was like, yeah, I go out to Mongolia. What? Yeah, no problem, just give us a ring. Yeah, so they told me to, as soon as finishing could be done and I could extract myself from the company, they would take me on and send me out to Mongolia. So we agreed a package, I left, I kept my Chinese email address so people could write to me and I could send email back. So the way I extracted myself from the company was also something that I learned in management, in that if I in China had said, I'm leaving, there would have been a void and I would have created a hole. And what happens when somebody leaves, everybody tries to fill it, and they fill it with the most awful things like, he promised this, he promised that, he said this, he said that. That's not the way we interpreted. The way we interpreted that was in this way to benefit themselves, whether that be within your own company or whether that be in a company you're cooperating with. So when you extract yourself from a company, it's got to be on the best of terms and it's got to be in a controlled manner. So what I actually did, I said, right, I'll move out with all my email addresses and all my emails will go to one person in the parent company and he can tell me what I've got to send back. And in that way, I'd gone into a company, I'd helped sort it out, I'd helped align it with quality, business plan, structure, and the separation of a joint venture into a wholly owned company. And I'd come out, nobody even knew I'd left. Nobody knew I'd gone. It was like, he's been away 2 weeks. Oh, he's gone to, I think they said I was in the Philippines. So I was in the Philippines. Where's he gone now? I think he's in Australia. And I went all these different places in theory. But in practice, I was working for another company in Outer Mongolia, sending emails round with people that didn't jump in that void and create problems which were costly to the company. So nowadays when I see people leaving companies, I'm disappointed in that professional people can leave a company and as a result leave a void behind. And if you go back to the recent conflicts like Gaddafi, as soon as you pull that guy out, vacuum. Everybody's got to fill it, everybody wants to be part of it, everybody sees it as somehow to make money. And so management change is something which is very subtle. It's not something that's a big, this is how you do it. It's very subtle. You move people around in a very quiet manner. And in the same way as when I went out to Mongolia,
I didn't speak Chinese for weeks, but I was looking after 800 Chinese contractors, 800 Chinese people. And the only person that knew I spoke Chinese was the lead guy in the Chinese company. And I told him on the first day, we had a private conversation. I knew a lot of things I'd been told, and I went and told him, I was straight up front with him. This is what we believe. It mightn't be true, it might be true, but this is what we're led to believe, and I need to fix it. And that actually, having a private conversation with him, gave him time to sort it out without it all becoming inflamed. So again, it's just a management style. You don't go in with a big stick. You don't put things under the carpet because they're just bumps in the road later on. You've got to have a clear playing field. You've got to be transparent about what you do. And transparency is everything. And unfortunately, when you have a joint venture, it's almost impossible to be transparent unless you have the right people and the right culture in place. So we used to say, and I come up with this saying in China with the consulate in Guangzhou and a very good friend, Bob Sheed, who was the commercial guy. And we used to say, a joint venture exists on paper and in people's head. A joint misadventure is what you get. And a joint venture is what you organise, a joint adventure is what you get, and a misadventure is what you had. Because when you start a joint venture, everybody wants something different out of it. And somebody, unfortunately, has got to be the leader. A joint venture of 49-51, 50-50 never works. Because you're both putting the same amount of money in, and the other person has got the one with the most shares. It might be one share, might be two shares, has got to lead it. And that will never work. Your joint venture has got to be positive, managed, and that means it's got to be 65-70% one party. Therefore, you can have leadership, and that's the way it goes. If it goes down, if it doesn't work, one party's to blame. And if not, there's a squabble. But going into business, like all business plans, you really need to put the business plan together and have how you're going to sort out conflict. Because conflict in a joint venture or in a foreign country is really difficult. So you've got to have a process, and if you have a joint venture, how are you going to wind it up? Because if you've got a joint venture, say in China or Russia or anywhere else, you're going to help that company, you're going to put your life and soul into it, because that's what you said you're going to do. Yeah, in the dream, you want to work together. But in 15 years' time, the life of that joint venture, who owns the shares? Who owns that market? Who owns that brand? All this has got to come out before you join together. So it's not an easy thing setting up a joint venture or setting up a structure in another country. So we've talked again. I'm in Mongolia. I hope to see you again. So here's me signing off, and I hope you have an enjoyable day. Thank you. Hi, I'm Uma Malhotra, and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra.
Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, bahut vadiya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हेड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हेड सुलेमान की हवेली लखा।
Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor. I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time.
When I saw my father treating patients and the satisfaction that he used to get in treating patients who were disabled and suddenly making them walk, that gave me an inspiration as well. And that's where my mindset right from childhood was that I want to help people, I want to do something for the country. And that's where I became a doctor and then became an orthopedics and a trauma surgeon. And then wanted to learn more and see what the best things were happening in different centers in the world. So that's where I went out to do my AO fellowship from Canada and then fellowship in knee surgery from the United States of America, and where I got an opportunity to work with the guru of knee surgery in the world. And that was something, a patient, when somebody would come in and basically who could barely walk, making them walk again. A trauma patient coming in who was disabled and making them walk again was a great satisfaction. When I saw all these patients lying on the road, and 95% chances were that nobody is going to help them. So that was an inspiration that I got from the med school when I was there, and we had done the first study that in case of an emergency, there were 95% chances you not get an ambulance. We kept working as a social work to do something about it. And we went and tried to revamp the existing organizations, revitalize them. But then when it all didn't work out, so it came to a stage where they said, either you do something about it, which meant that I had to leave my career, a good practice, my own family hospital, and which was actually a very, very difficult decision. My family thought I was crazy, I was mad, that I was thinking of leaving my practice. Where am I going to earn from? The biggest challenge that we faced when we were making rescue was changing minds. The mindset was, this can't be done in Pakistan, a developing country, a rescue service, and one number and people will immediately get help. So it was like as if I was talking some very strange words, and this was impossible in a developing country. The biggest challenge was we didn't have trained human resource. For the first time, we started the training of emergency medical technicians. Then the ambulances. If we imported them, we couldn't maintain them, the repair and maintenance would have been necessary. So we had to start the fabrication of ambulances within Pakistan so that it was easy for repair and maintenance. Then we started it in October, so in 2004. And everybody was, it will not work out. We started with only 14 ambulances in the city of Lahore. A change of government is always a challenge. Whatever initiatives have been taken by the previous government, the new government looks at it from an apprehension and they want to start their own project. Initially, we did face a lot of resistance, and obviously we had to clarify all of those things. So the challenge and rescue go together. And when these people, even from the new government who went there and said, my mother has been saved because of this, you can stop everything else done by the previous government, but not this service. So I think that became our biggest help, and our performance spoke for itself. Starting from the city of Lahore in 2004, and today, after 16 years, when I see what we've been able to achieve, even it's difficult for me to believe that. Where we started from 14 ambulances and then expanded to all the 36 districts of Punjab province with 110 million population, our fleet went up to 350 ambulances. And we kept it very cost effective, developing a response time based model rather than a population based model. So with minimal resources, we were able to extensively cover the area. When we saw the challenge of the increasing traffic, the congested areas, the walled city or the old city areas where it was very difficult for the ambulance to respond, we went into a motorbike ambulance service. And today, the motorbike ambulance service has transformed everything, and we've been able to respond to over 600,000 calls up till now with an average response time 4 minutes, which I think is comparable even internationally. And everybody, even when we were starting the motorbike ambulance service, was a lot of apprehension. This will not be successful, this is going to be a waste, and nobody could really believe that they could do it. And today, they are able to reach the most difficult areas, the most difficult, narrow streets, even in traffic congestion, they're able to respond to emergencies, and they immediately go, they're all trained staff. In 2005, we had an earthquake in Pakistan, and we saw the helplessness of the people. And immediately, 1 year after that, we established our own disaster emergency response team. And then the team, we started building our teams and the capacity of that team. And we finally applied for UN certification in 2015 after we had met the basic requirements. And today, we are the first team, the search and rescue team, which got the UN certification from INSARAG.
in South Asia. But then we established a model fire service, a modern fire service from Lahore in 2007, and then this service has gradually expanded to all districts of Punjab. And today this fire service has responded to over 151,000 fire incidents and saved losses worth over 450 billion rupees. So I think that's just by improving the response and professional firefighting. Then came the floods 2010, which was a major event. And so it's like, so that was, we saw the helplessness over there. So we collected all the boats available with different organizations, so organized the service. And today we manage all the floods in the city, every year which come in the province. And today we've rescued over 200,000 victims, from different flood-prone areas or inundated areas. So this was a big change. After the successful launch of an emergency rescue service in Pakistan, I still always wanted to go back and help the people of this country. So my old patients and everybody else motivated me that I needed to give more time to this clinical practice. So I had to sacrifice my evenings for this. So I had to sacrifice my private life, and I dedicate 3 evenings at least in a week to come and help these poor and needy patients. Clinical practice is very important. It keeps you humane, because once you're involved in the entire day in the administrative affairs, managing such a large service, then coming and helping people in need is a lot of satisfaction. And I think if I can provide them with those services, I think that's the biggest satisfaction that I get, which no money can bring. Today I'm very pleased that a mission impossible of saving lives has been accomplished, and millions of people have been rescued without discrimination. But I hope that we can establish safer communities to live, work and travel in Pakistan. That's our vision for the next 10 years. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting. Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था, और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है और महकमा स्कूल एजुकेशन ने पुराने असासा से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है। जाहिर सी बात है, जब पंजाब हुकूमत कोई फैसला करता है और इसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाता है, फिर महकमा स्कूल जो है उन्होंने भी एक्शन लिया है। जो असासा जो पढ़ा रहे हैं 20-20 सालों से, 10-10 सालों से, 15-15 सालों से स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, तो अब उनको कहा जा रहा है कि जी आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। जो उस टेस्ट में पास होगा तो वो पास होगा, जो फेल होगा वो फेल होगा। और ये जो फैसला लिया गया, क्या ये ठीक फैसला लिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से? क्या आप टीचर्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे अपने हक के लिए और एहतजाज करेंगे कि नहीं करेंगे? ये वक्त ही बताएगा। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ज़ीशान अकरम, सीनियर लेक्चरार हैं और निजी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं। इनसे बात करते हैं। ज़ीशान साहब, क्या कहेंगे, ये जो फैसला पंजाब हुकूमत ने किया है और महकमा एजुकेशन जो हमारा है उन्होंने भी कह दिया कि जी अब जो पुराने जो टीचर्स हैं इनसे हमने जान छुड़ानी है और जो इनको दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप भी इतने अरसे से लेक्चरार हैं, निजी यूनिवर्सिटी में आप लेक्चर दे रहे हैं, तो आपसे अगर टेस्ट लिया जाए, आपका अगर तजर्बा 10 साल का है, तो आप अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे फिर? वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मौके पर इनवाइट किया जहाँ पे सभी टीचर्स को एक आवाज़ बनकर खड़ा होना चाहिए। तो अगर हम देखा जाए कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो फैसले पे हमें एतराज़ नहीं, इस तरह नहीं है, लेकिन अगर हम उसको एक पॉजिटिव एंगल में देखा जाए, अगर तो वो टीचर्स से जान छुड़वाना चाह रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, हाँ, अगर वो इस चीज़ को अगर पॉजिटिव एंगल में ले, टीचर्स की इम्प्रूवमेंट्स के लिए उसे टेस्ट दिलवा रही है और उसे कहा कि वो अपने एजुकेशन कैरियर्स को इम्प्रूव करें या जो उनकी स्किल्स हैं उसके हिसाब से इम्प्रूव करें, तो फिर ये फैसला जो है एक पॉजिटिव माइंड में दिया जा सकता है। देखिए, अगर एक टीचर है, अगर आप एक टीचर हैं, आपने अप्लाई किया है, जिसके थ्रू भी आपने अप्लाई किया, आपका टेस्ट लिया गया है, ठीक है, इंटरव्यू आपको हुआ, तब जाके आप पास हुए ना, ऐसे थोड़ी पास होता है। ठीक है, अब एक प्राइवेट इदारा है, ठीक है, वो 2-3 मरतबा टेस्ट लेता है, उसके बाद इंटरव्यू उसका होता है, उसके बाद जाके वो पास होता है। ये जो सरकारी इदारा है, पता नहीं कितनी बार टेस्ट लिए गए होंगे पहले और कितनी बार इंटरव्यू किए गए होंगे उनके, तब जाके वो उनको सीट मिली है ना। अब 10-10 साल का जिसका एक्सपीरियंस है वो बेचारा अब फेल हो जाता है तो कहाँ जाएगा फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे बहुत से टीचर्स ऐसे भी होंगे जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स वगैरह को पढ़ा रहे होंगे या मिडिल में पढ़ा रहे हैं, तो अब वो उनको इतनी देर पढ़ाते हुए हो गई है तो उनका कोर्स तो डेफिनेटली वो प्राइमरी और मिडिल वाला रह गया। अगर आप इस टाइम पे आके उनसे मास्टर्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, उस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, तो डेफिनेटली इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ना गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए कि गवर्नमेंट इसको इम्प्रूवमेंट के तौर पे अगर ले, अगर वो ये करे कि अपने टीचर्स के नॉलेज को इम्प्रूव करे, उनके ऊपर काम करे, तो वो एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन इस तरीके से चलना जो है ना वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या टीचर्स जो हैं आप सारे इकट्ठे होंगे पंजाब के कि नहीं? डेफिनेटली टीचर्स सब मिलकर ही चलते हैं और इनकी एक कम्युनिटी है, ठीक है, और उस कम्युनिटी को टीचर्स ही ऑन करते हैं। तो अगर आपको याद होगा पहले भी जब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि प्राइवेट स्कूल कर देंगे हम लोग सभी, तो तब भी काफ़ी देर लाहौर के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है ना एहतियात चलते रहे। तो टीचर्स अपने हक के लिए पहले भी बाहर निकले, तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो डेफिनेटली वो सभी लोग एक साथ। टीचर्स को हक क्यों नहीं दिया जाता? देखें, अब इनकी पेंशन भी बंद हो जाएगी, जो सैलरी लगी हुई है, जाहिर सी बात, जो जितना अच्छा उसने काम किया है, जॉब की है, सैलरी मिली, अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, उसका जो पेंशन होगा वो भी नहीं मिली, पेंशन भी खत्म हो जाएगी अब तो। ठीक है, असल में पेंशन का तो होना चाहिए। देखें, एक पर्सन ने अपनी जिंदगी के 32 से 35 ईयर आपको दिए और 35 साल के बाद अगर आप उसको कहते हैं कि अल्लाह हाफिज, ऐसा आपके हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो उससे बेहतर था कि वो 35 ईयर वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता, कहीं और इन्वेस्ट करता, ताकि वो बाद की जो जिंदगी है वो आसानी से गुजार सकता। तो अगर गवर्नमेंट ने पेंशन खत्म करने का फैसला किया है खासतौर पर टीचर्स, तो वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि टीचर्स किसी भी कौम को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन सियासतदानों को ये चीज सोचनी चाहिए कि आज जहां ये हैं इनको भी किसी टीचर ने पढ़ाया है, इनके जितनी भी कैबिनेट में जितने लोग हैं उन सबको भी किसी ना किसी टीचर ने पढ़ाया हुआ है। तो इनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आज जहां ये हैं किसी ना किसी टीचर की वजह से। तो अगर ये टीचरों के लिए ऐसा सोचेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। वैसे क्या सोच के ये जो डिसीजन लिया गया है, क्या सोचा होगा इन्होंने कि ऐसा करेंगे, क्या इसमें बेहतरी आएगी? अभी बेहतरी नहीं है वैसे इतनी, बेहतरी है, इन्होंने का आइडिया नहीं है कि इन्होंने किस एंगल पे जाके इसको देखा है, क्योंकि होता है समटाइम के सोचने वाला पर्सन को कोई और होता है और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग कुछ और होते हैं। आया अगर इसकी जगह आप किसी टीचर कम्युनिटी को बिठाकर, जो इनके हेड्स वगैरह उनसे बिठाकर कोई मशवरा लेते, तो इस चीज को बेहतर इंप्रूव किया जा सकता था। गवर्नमेंट शायद सोचती है कि
जो है ना, हम अगर यहाँ से पैसा बचा लेंगे, ठीक है, तो हम इसे किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर लेंगे, तो ये गलत है। अगर किसी भी कौम ने तरक्की की है तो उसने तालीम के बिहाफ पे की। आप किसी भी गवर्नमेंट चीज को उठा लें, आप चाइना को ले लें, इंडिया को ले लें, किसी भी चीज को, तो उन लोगों ने इंप्रूवमेंट ही तालीम के बिहाफ पे की। अगर आप उस तालीम को ही कम कर देंगे तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे होगी? फिर टीचर्स का जो मुस्तकबिल है इन फ्यूचर वो क्या होगा फिर उसका? फिर वो यही होगा कि लोग गवर्नमेंट टीचिंग की तरफ नहीं जाएंगे, वो प्राइवेट इदारों की तरफ आएंगे और प्राइवेट इदारों में रहेंगे। और जो प्राइवेट जो इदारा है, चाहे वो कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, क्या इतना पे करता है? अब उसमें यही चीज है कि प्राइवेट जो है वो उतनी सैलरीज नहीं पे करते, लेकिन कम से कम उनको ये तो होगा ना कि यार जॉब्स तो हमारी सिक्योर होंगी ना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट में 32 ईयर सर्विस देने के बाद उन्हें मिलता ही कुछ नहीं है, तो वो इससे बेहतर है कि वो किसी और जगह पे चले जाएंगे, वो टीचिंग लाइन में नहीं आएंगे। और आपने देखा होगा कि ये टीचिंग पेशा सिर्फ एक पर्सन का नहीं होता है, ये बेसिकली मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है, ठीक है। तो मौलम बेसिकली जो है वो ऊपर से बनकर आते हैं, तो अगर आप वो जो खुदा की बनाई हुई चीजों के साथ ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के लिए भी क्रिएट होंगे और कम्युनिटी के लिए। क्या समझते हैं ये जानबूझ के ये डिसीजन लिया गया? अब वो महकमा एजुकेशन ने उनका डाटा मांगा है, जिनकी जो एज है टीचर्स की 50 से 55 साल जिसकी एज है, उन्होंने कहा डाटा फ्राहम करें, इनको हम फारिग करते हैं। वो बेसिकली तो यही चाह रहे हैं कि उनकी पेंशन से चीज़ों से बचा के जो है ना वो जो अपने अखराजात हैं वो उसको मीट करना। हालांकि उस चीज़ को करने के लिए और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट अपने जो जितने भी एक्सपेंस है उसको कम कर सकती है, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने एक्सपेंस करके वो ज्यादा से ज्यादा जो है तालीम पे लगाएं। अगर हम देखें तो तालीम के बजट पे बहुत ही कम चीजें लगाई जा रही हैं, ठीक है। मतलब अगर जितना बोला जा रहा है उतना भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट सिस्टम को देखते हैं, ठीक है, टीचर बेशक पढ़ाता है लेकिन सिस्टम तो हमेशा गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम भी नहीं ना बना रही, ठीक है। वो कह रही है ठीक है जो हैं उनको बाहर करते हैं और इसको ना हम लोग प्राइवेटाइज कर देते हैं, ठीक है, और प्राइवेट लोगों को देते हैं, वो सिस्टम चला लेंगे। देखिए प्राइवेट एक होने वाला है अब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपने प्राइवेट ही इदारों को देना है सिस्टम, तो फिर आप गवर्नमेंट के पास क्या रहेगा? यानी किसी भी गवर्नमेंट के पास 3-4 तो चीजें होती हैं, एक तालीम होती है, एक सेहत होती है, ठीक है। यही 2 चीजें हर पर्सन को बेसिकली कंट्री में रहने के लिए चाहिए होती है, और अगर वही चीज ही उनके हाथ से छीन जाएगी, डेफिनेटली अगर वो टीचर जाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम नहीं रहेगा। देखिए ना, आपकी बात ठीक है। अब इनको जब फारिग किया जा रहा है, ये तो एक बहाना ही है ना कि टेस्ट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो टेस्ट में यानी कि हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है, दोबारा रखना पड़ेगा फिर उनको। तो डाटा मंगवा लिए 55 साल वाले, 50 साल वाले, फिर दोबारा रखना पड़ेगा। वो रख भी लेंगे तो वैसे भी उनकी वो एज अब डेफिनेटली 60 के करीब पहुंचे, 60 के बाद उनकी वैसे भी रिटायरमेंट हो रही है, यानी कि ये पैसा बचा रहे हैं, पैसा बचाने बेसिकली वो इस चीज की तरफ जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना अब इनको यहाँ पे रोका जाए, और इनकी जो पेंशन के ऊपर जो अखराजात होते हैं, डिफरेंट जो इन्हें प्रोविडेंट फंड के तौर पे चीजें दी जाती है, उस चीज को रोका जाए। अच्छा ज़िशान, पहले ये खबर चली थी कोई 1 हफ्ता पहले की बात मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जितने भी सरकारी जो स्कूल हैं, ठीक है, इनको हम प्राइवेट करेंगे। क्या ये फैसला वही फैसला है? अब इसके ऊपर अमल करवाया जा रहा है टीचर्स के ऊपर? जी, गवर्नमेंट ने न्यूज़ की थी और उसमें से बहुत सी जगहों पे इन्होंने प्राइवेट करने का फैसला भी कर लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें इन्होंने अपने काफ़ी स्कूल्स वगैरह जहाँ पे ये कह रहे हैं कि टीचर्स की तादाद ज़्यादा है, स्टूडेंट की तादाद कम है, तो ठीक अगर आपने उसको करना है तो आपको अपने सिस्टम को बेहतर करें ना। मतलब बाहर से ला के इम्पोर्ट करके अगर आप उस पर सिस्टम पे लोग बिठा देंगे तो वो किस तरह चलेगा, ठीक है। आपको चाहिए कि आप अपने सिस्टम को बेहतर करें। देखें, अगर आप किसी को तालीम देंगे तो वो सिर्फ एक पर्सन की तालीम नहीं है, वो एक खानदान की तालीम है, ठीक है। और उस खानदान में अगर 6-7-8 लोग बसते हैं तो 6-7-8 लोग। और अगर आप देखें इसी तरह अगर हम बॉयज और गर्ल्स की बात करते हैं तो अगर हम किसी बेटी को तालीम देते हैं तो इसका मतलब है कि वो आने वाली नस्ल को तालीम देगी, और आप टीचर्स से बेसिकली वो चीज नहीं छीन रहे हैं, बल्कि वो जो बच्चे उनके पास पढ़ रहे हैं उन पे भी उन चीजों का असर पड़ेगा। देखिए, हालात पहले ऐसे हैं मुल्क के, और महंगाई इतनी है, गरीब का बच्चा कहाँ पे जाएगा? अभी तक देखें, अगर आप प्राइवेट स्कूल में कहीं जाते हैं दाखिले के लिए तो कम से कम जो उसकी जो फीस होती है वो 10,000, 5,000 से शुरू होती है, मैक्सिमम 10,000 होती है। जो मैं एक लो लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर एक हाई लेवल का है बच्चा है तो उसकी तो फीस भी ज्यादा होगी। तो आम रूटीन का जो बंदा एक है जिसकी सैलरी 50,000 या 40,000 है, वो क्या करेगा? उनके लिए यही तो प्रॉब्लम है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने एक अच्छे टीचर को निकाल दिया, क्योंकि एक 55 एज में या 50 में या 45 में जो टीचर बैठा हुआ है वो डेफिनेटली उसके पास एक एक्सपीरियंस है, और वो अपने एक्सपीरियंस से ही बेसिकली जो है ना आने वाली नस्ल को क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, ठीक है। जब आप अपने एक्सपीरियंस वाले लोगों को निकाल देंगे
तो और उनकी जगह आप नीचे से जो है ना नए लोग लाएंगे तो डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस उस तरह नहीं होगा, उनको बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, और वो असर जो है वो उस कम्युनिटी के ऊपर पड़ेगा जो कम्युनिटी उनसे पढ़ रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक टीचर की जिंदगी का फैसला नहीं है, ये बस बेसिकली जो है उनके साथ जुड़े हुए लोग, स्टूडेंट्स, उनके खानदान और उन सब चीजों के ऊपर ये चीज असरअंदाज होगी। ठीक है दिशान, ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी टीचर्स के हवाले से। ज़िशान, अगर प्राइवेट करने जा रहे हैं, टीचर्स को निकाला जा रहा है जानबूझकर, क्या समझते हैं कि जब प्राइवेट स्कूल होंगे क्या ये कामयाब हो पाएंगे? नहीं, प्राइवेट स्कूल अब उस तरीके से डेफिनेटली उस सिस्टम को नहीं चला पाएंगे। कैसे? जैसा कि अब देखें, गवर्नमेंट अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है। अगर ये प्राइवेट करते हुए तो उन लोगों ने ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जिनके पास उस चीज़ें की सहूलतें ही नहीं है, वो बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड ही ना कर पाए। किसके हाथ में दे दी है? ठीक है, किसी भी पर्सन के हाथ में जो कि उस चीज़ को ना चला पाए, तो उसका असर तो डेफिनेटली होगा। तो इन्हें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि हम उस चीज़ को किसी के हाथ में देने के बजाय थोड़ा सा इन्वेस्ट हम करके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो रिसोर्स हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज लगाकर उन चीज़ों को बेहतर कर सकती है, ठीक है, ना कि इसको बिल्कुल ही वो ख़त्म करने की तरफ चली जाए। टीचर्स को ट्रेनिंग करवानी चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। अगर कहीं पे कमजोरी नजर आ रही है, किसी यानी कि सरकारी इदारा है, स्कूल है, छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, उस अगर टीचर की अगर वो ट्रेनिंग करवा दी जाए तो बेहतरी आ सकती है इसमें। बिल्कुल बेहतरी है कि क्यों नहीं आ सकती है। देखें, आप किसी भी पर्सन को ट्रेन करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके साथ इम्प्रूवमेंट करें, यानी उसमें नॉलेज जो है इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉलेज से डेफिनेटली जो है चीजें तो इंप्रूव होंगी और उसका असर भी होगा, ठीक है। इन ट्रेनिंग में अगर हम सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर है, ठीक है, तो आप देखें कि आप उसको मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग्स वगैरह दें कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे लेके चलना है, क्योंकि उस चीज के ऊपर अगर हम अच्छा काम कर लेंगे तो डेफिनेटली जो आगे हमारी चीजें हैं, मिडल और हाई और सेकेंडरी स्कूल जो है, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह, वहां पे हमारी चीजें जो है ना बेहतर हो सकती है। तो ट्रेनिंग्स वगैरह होनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज की जो है वो हर साल ट्रेनिंग्स वगैरह करवाती है डिफरेंट चीजों के ऊपर। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर लेके आए जिसके अंदर जो है ना आफ्टर ईयर, ठीक है, जब टीचर्स को ब्रेक आती है, जैसे फॉर एग्जांपल समर ब्रेक आती है, तो वहां पे जो है उसको, या विंटर ब्रेक आती है, तो वहां पे उनके लिए कुछ ट्रेनिंग्स रखी जाए, ठीक है, जो ट्रेनिंग जो है वो नॉलेज के हिसाब से भी अच्छी होनी चाहिए और करंट चीज़ों के हिसाब से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम बात करते हैं कि जैसे चैट जीपीटी है, यूज़ करें, कंप्यूटर वाले यूज़ करें, तो उसके साथ वो ट्रेनिंग जो है इस्लामियात, उर्दू, पाक स्टडी, ऐसे लोगों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सके, ठीक है, और आने वाले जितने भी लोग हैं उनको जो है वो बेहतर कर सके। देखिए, अगर इस ट्रेनिंग, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रेनिंग करवानी चाहिए। अगर ये ट्रेनिंग करवाते हैं उसके बाद डिग्रियाँ भी चेक की जाएंगी इनकी, फिर ये समझेंगे कि यार ट्रेनिंग के काबिल नहीं था, फेल हो गया है, और दोबारा इसका वो हमने टेस्ट लिया वो भी फेल हो गया है, डिग्रियां भी चेक की जाएंगी दोबारा, क्या समझते हैं? देखें, डिग्रियां तो डेफिनेटली जब हायरिंग होती है उस टाइम चेक कर ली जाती है, तो मेरे ख्याल से बार बार चेक करने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखें, जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। बात है ना, जब आपने एक बंदे का टेस्ट ले लिया है, पास हो गया है, इंटरव्यू हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर फेल करने का मतलब बनते ही नहीं है, जान छुड़ाने का मतलब बनते ही नहीं है, और उसकी पेंशन बनती है जिसका उसका एक्सपीरियंस है, चाहे वो 10 साल है, 20 साल है, जितनी भी उसने जॉब की है। तो कहने का मकसद ये कि फिर दोबारा उनके वो भी चेक किए जाएंगे ना फिर तो। नहीं, अगर गवर्नमेंट इस फैसले को देखे तो वो हो सकता है कि उसको चेक भी कर ले, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको चेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे लोग हायरिंग प्रोसीजर से गुजर कर आए हैं। एक आपके पास इदारे हैं डिफरेंट, जैसे पीपीसी है, एनटीएस वगैरह, तो वो जब भी इंटरव्यूज वगैरह करते हैं या टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो वहां पे वो सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो अगर आप दोबारा डिग्री चेक करने की बात करें तो इसका मतलब है कि आपके इदारे कमजोर हैं जिन्होंने पहले चीजें सारी चेक की हैं, ठीक है, तो आप अपने ऊपर ही सारी कुछ लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके आए होते हैं। अच्छा, ये ज्यादा असर ज़िशान किस टीचर के ऊपर पड़ेगा? जो आपके जो टीचर, नए टीचर्स जो आए हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनके ऊपर असर पड़ेगा, जो पुराने जो टीचर्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा? ये ज्यादातर जो पुराने टीचर्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान भी यही है ना कि पुराने टीचर्स को, क्योंकि नए टीचर्स तो वो अभी क्या करते हैं, जब हायर करते हैं तो 6-7 साल के बाद जाके उनको कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव करके परमानेंट की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑलरेडी परमानेंट टीचर हैं वो उनके ऊपर बेसिकली काम करना चाह रही है, ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है वो 7 साल में उसको नई परमानेंट जॉब की तरफ शिफ्ट नहीं करते हैं तो वो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट उसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उसमें लॉस है ही नहीं। गवर्नमेंट को लॉस है बेसिकली उन लोगों से जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज हैं और जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, जिनकी सैलरी ज्यादा हो चुकी है, डेफिनेटली रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट में उनकी एक पेंशन बनती है, एक अमाउंट बनती है। एक नौजवान यंग है, अगर वो टीचर है, पढ़ा रहा है, जब वो देखेगा कि यार इनके साथ ये हो रहा है, कुछ सालों बाद मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, फिर हो सकता है ना, फिर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और वो फिर क्या करेगा, इस पेशे से पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो दूसरे किसी और एक्टिविटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जो है ना वो अच्छे टीचर नहीं होंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो आपने जो ये तालीम का निजाम खड़ा किया हुआ गवर्नमेंट का, वो सारा तालीम का निजाम जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
बच्चों के ऊपर कितना असर पड़ेगा अगर टीचर्स चेंज होते हैं? हर टीचर के साथ एक उनका कम्युनिकेशन रब्ता होता है कि ये टीचर कैसा है, इसकी नेचर से वाकिफ होते हैं, उस्ताद भी उसकी नेचर से वाकिफ होता है, बच्चा भी होता है, एक अच्छा एक कंपटीशन होता है उन दोनों का आपस में। तो जब नया टीचर आएगा वो अपनी बातें बताएगा, बच्चा अपनी बातें बताएगा, फिर कम्युनिकेशन आपस में कैसा बनेगा इनका? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप टीचर्स चेंज करेंगे ना तो जो स्टूडेंट है ना उसका टीचर के साथ अगर सपोज एंड नहीं बनती है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात वो चीजों को समझेगा नहीं। अगर वो समझेगा नहीं तो जब अगली क्लासेस में जाएगा वो उन चीजों को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टीचर चेंज करने से बहुत से इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो टीचर और स्टूडेंट की फिर आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि पहले जो टीचर ने उसने डेफिनेटली क्लास को मॉडिफाई किया होता है अपने हिसाब से। ठीक है, उसने अपने हिसाब से तरीके से क्लास को लेके चल रहा होता है कि यार हर स्टूडेंट को उससे पता होता है। ठीक है, तो अचानक एकदम सपोज दैट एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में आके आप टीचर चेंज कर देते हैं, तो अब स्टूडेंट किससे पूछेगा? स्टूडेंट जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा फील कर रहा है कि यार मैं सर से पूछूंगा या मैं फीमेल टीचर से पूछूंगा तो वो कैसा आंसर देगी? ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि उस बच्चे का हो सकता है एग्जाम अच्छा ना, वो डिप्रेशन के अंदर चला जाए। ठीक है, और बात कहां से कहां चली जाएगी। ठीक है, तो अगर वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। निशान, आप भी पढ़ा रहे हैं, जब पुराने टीचरों को निकाला जाएगा और लोग कहेंगे कि यार आपको निकाल दिया है, तो क्या इंप्रेशन जाएगा उसके ऊपर? इंप्रेशन तो बहुत बुरा जाएगा, क्योंकि वो टीचर बेसिकली हमारे लिए भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे जब जूनियर टीचर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सीनियर टीचर्स हेल्प लेता है। तो जब आपके सीनियर ही नहीं होंगे तो आप हेल्प किससे लेंगे? हेल्प ही नहीं लेंगे तो जो आपको गलत आता है, सही आता है, जो भी आपने नॉलेज जो है वो डिलीवर कर देना। ठीक है, जब आप इस तरह चीज़ें डिलीवर करेंगे तो वो फिर असर जो है बच्चे के ऊपर होगा। ठीक है, तो सीनियर्स का हमेशा से होना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि सीनियर्स आपको सिर्फ तालीम के नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर मामलात में जो है ना वो आपको गाइड करते हैं, आपको लेके चलते हैं। अगर वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल गाइड करते हैं, सारा कुछ करते, सीनियर होते हैं तो साथ काम होता है, वैसे साथ काम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, अब एक सीनियर है इसको निकाल दिया जाता है, जैसे अब गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि निकालने का फैसला किया है, कहीं और जगह पे जाता है, प्राइवेट इदारे में जाता है, तो प्राइवेट इदारे से आपको यही रिस्पॉन्स उसको मिलेगा ना कि यार आपको तो वहां से निकाल दिया गया है, आप तो पास ही नहीं हुए, मेरे पास तो जॉब नहीं है आपकी। बिल्कुल ये असर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अब डिग्री लेके जाएगा तो वो ने कहेगा कि मेरा जो है वो 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो कहेंगे 20 ईयर का एक्सपीरियंस आपने कहाँ स्पेंड किया है? तो वो कहेगा मैंने फलां गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में स्पेंड किया है। तो वो कहेगा तो फिर आपने वहां से क्यों छोड़ा है? तो वो जब रीजन बताएगा कि मुझे गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, तो वो स्कूल का जो ऑनर होगा या प्रिंसिपल है, कोई भी है, मैनेजमेंट कम्युनिटी है, वो सोचेगी यार अगर इसको निकाल दिया वहां से, इसका मतलब जो है इसका बिहेव अच्छा नहीं है या इसको कुछ नॉलेज के बारे में प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी इसे जॉब पे नहीं रखेंगे। तो इसका हल कैसे निकाला जाए? वो बेचारे कहाँ पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर अपने काम करेंगे, फिर अपनी यानी कि एकेडमी या कोई प्राइवेट स्कूल बनाएंगे? फिर नहीं, पहला है कि हमें इस चीज की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, हमें उस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर तो डिसीजन हो गया है ना, अब तो डिसीजन हो गया, लेकिन देखें डिसीजन तो बदले जा सकते हैं, डिसीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट के तौर पे उसे ले लें। आप कह लें कि आप टीचर से एग्जाम ले रहे हैं जिनके इस तरह के मार्क्स आएंगे तो हम उनकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा चीजें वगैरह कराएंगे ताकि वो उन चीजों को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और बच्चों का उसके ऊपर जो है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि बच्चे देखेंगे जब हमारे टीचर जो है वो वेल ट्रेंड होके आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें आने वाली चीजों के बारे में पता है, हमारे सब्जेक्ट का भी पता है। जैसे एग्जाम्पल लेते इस्लामियत का टीचर है, तो अगर उसे दीन और दुनिया के बारे में हर चीज का इल्म है, लेकिन उसके साथ अगर उसे इंडस्ट्री का भी इल्म है, जिससे जो करंट चीजें चल रही हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे जो है उससे खुश होकर पढ़ेंगे। ठीक है, वो कहेंगे सर ने सिर्फ जो है हमें सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया बल्कि हमारे साथ जो है वो हमारी चीजों को भी लेके चले, हमारी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो उनको भी उसने सॉल्व करवाया। तो उसको हम पॉजिटिव एंगल में ले लें, हमने जरूर उसको नेगेटिव एंगल की तरफ लेके जाना। जैसे अब पुराने टीचर्स हैं उनका इल्म ज्यादा होगा, जो नई जनरेशन आई है, तालीम में कितना फर्क है, क्या डिफरेंस है तालीम में? अब अच्छा, दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि नॉलेज में जाहिर सी बात है जो न्यू कम्युनिटी आ रही है, ठीक है, वो एडवांस नॉलेज के साथ आ रही है, उसके पास चीजें अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन उससे उस डिलीवर करने का भी तो प्रॉब्लम है ना। अब जो पुराना टीचर है अगर उसके पास नॉलेज कम है लेकिन अब वो चीजों को अच्छे से डिलीवर भी कर रहे हैं, तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपने 10 में से 5 चीजें अच्छे तरीके से डिलीवर कर ली हैं, ठीक है, और अगली 5 आपने नहीं किया, तो स्टूडेंट इतना काबिल हो जाता है कि वो अगली 5 खुद सीख लेता है। लेकिन अगर आपको 10
10 की 10 आते और आप डिलीवर ही नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल से वो एक भी चीज़ जो है नई नहीं सीख पाएगा। तो वो जो चीज़ है ना, वो सीनियर्स बेसिकली उनके पास एक तजर्बा होता है कि स्टूडेंट्स को कैसे लेके चलना है, हमने तालीम के मयार को कैसे लेके चलना है, मैंने इंप्रूवमेंट्स करवानी है स्टूडेंट्स को, मैंने गाइड करना है तो कैसे लेके करना है, ठीक है। क्योंकि अब जो नया टीचर आता है तो उसके पास उसको इंडस्ट्री में एक ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो टाइम जब तक वो अपना गुजारेगा तब तक वो स्टूडेंट की जिंदगी तो खत्म हो चुकी होगी ना। ठीक है दिशान, ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है तालीम की। ज़िशान, तालीम का निज़ाम आखिरकार कब ठीक होगा? ये आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है। तालीम का निज़ाम तब ठीक होगा जब ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो तालीमी स्ट्रक्चर से आशना होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी भी पर्सन को एक पोजीशन पे अनाउंस करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो जिस पोजीशन पे आया है क्या वो उस पोजीशन के काबिल है या नहीं है। हम उस तालीम स्ट्रक्चर को लेकर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने किसी जगह पे बिठाना है तो आप जो डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स रात होते हैं, ठीक है, उनका एक एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, आप ऐसे लोगों को ऊपर लेके आए, ठीक है। आपकी वजारत है, नो डाउट, हम वजारत को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट रोल है, उस पर हमें चलना है, ठीक है, वो हर कंट्री के अंदर होता है, हमें भी चलना। लेकिन उसके साथ जो कमेटीज वगैरह डेवलप की जाती है, उन कमेटीज के अंदर जो हैं वो ऐसे लोग लाए जाएं जो कि उस स्ट्रक्चर से आशना है, ठीक है, उन्हें पता है कि स्ट्रक्चर उन्होंने चलाना कैसे है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर हजरात हो सकते हैं जो PhD हैं, जो पुराने सीनियर टीचर रिटायर्ड हो चुके हैं, उन लोगों को आप उस कमेटीज के अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि तालीमी निज़ाम को उन्होंने किस तरीके से गुजारा है, उसमें क्या कमियां थी, ठीक है, और वो तालीमी निज़ाम को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो फिर आपको वो कम्युनिटी जो है ना वो आपको बताएगी, ठीक है, तो फिर जो है हमारे लिए जो वो एक गवर्नमेंट है वो एक अच्छा फैसला ले पाएगी। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल चलते कैसे, हम खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़े, बिल्कुल, तो वो कैसे चलाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों को हमारी टीम में शामिल करना पड़ेगा जो हमारे साथ चल सके और वो पहले से उस सिस्टम का हिस्सा रहे हो, ठीक है। प्राइवेट टीचर और सरकारी टीचर में क्या फर्क है? प्राइवेट टीचर तो टीचर होता है, टीचर में तो कोई फर्क नहीं होता, फर्क स्ट्रक्चर का है, ठीक है, कि जो निज़ाम बना हुआ है ना, निज़ाम में फ़र्क है। हम किसी भी स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अगर उसका निज़ाम अच्छा है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, ठीक है, तो वो एक ऐसे टीचर को भी एक अच्छा टीचर बना के प्रेजेंट कर देती है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो एक जो अच्छा टीचर होता है भाई वो भी वहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल टीचर में मसला नहीं है, मसला जो है वो स्ट्रक्चर का है, ठीक है। अगर आपका स्ट्रक्चर बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपकी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू। आज की जो तालीम है, ठीक है, कोई भी आदमी बिजनेस करता है, अब ये बिजनेस 100 किस्म के बिजनेस हैं, अब तालीम को हमने बिजनेस बना दिया है। यूनिवर्सिटी खोलते हैं प्राइवेट बिजनेस के तौर के ऊपर, डिग्रियां लाखों रुपए में हो रही हैं। जब बच्चा बाहर निकलता है, डिग्री उसके हाथ में होती है तो उसको उर्दू पढ़नी नहीं आती। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक को उर्दू पढ़नी आती तो उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उसको। डिग्री का क्या फ़ायदा जब आपने बिजनेस ही करना है। यूनिवर्सिटी खाली बस एक दिखाया हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी बना ली है, नाम दे दिया है, ब्रांड दे दिया जी, स्टूडेंट की जो बेहतरी होती है बेहतरी नहीं होती वो। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है, और वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ये है कि स्ट्रक्चर और रोड मैप एक अच्छा बनाया जाए। और दूसरा, हमारे जो तालीमी निज़ाम है, जो उसमें बुक है, उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ तो जो चीज़ें मैंने आज से 10 साल 12 साल पहले पढ़ी थी वही चीज़ें आज भी हैं, तो वो उस चीज़ को बेहतर होना चाहिए, ठीक है। जब वो चीज़ बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली जब वो बच्चा पढ़ के इंडस्ट्री में जाएगा तो वो और अच्छा होगा। क्योंकि आप देखें, एक बच्चा अगर मैट्रिक से एक चीज़ पढ़कर आता है, जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है या तो वो बिल्कुल टोटल चेंज हो जाती है। तो उसको पहले तो समझ में नहीं आता है यार मेरे साथ हुआ क्या है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपका तालीमी निज़ाम जो है ना वो डे 1 से यानी नर्सरी से ऑनवर्ड जितना भी है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बच्चे ने एक इंडस्ट्री चूज करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बिजनेस में जा रहा है, तो उसको 9th क्लास से पता होना चाहिए कि 9th से लेके ऑनवर्ड मैंने ये स्टडी करनी है और मेरे ये जो है ना रोड मैप होगा और मैं उस रोड मैप को फॉलो करूंगा तो मैं अपने इस मकाम पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो रोड मैप का है। रोड मैप ही नहीं बना हुआ है, ठीक है, चीजें जो है वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। मालिकान तो बिजनेस कर ही रहे हैं, अब टीचर भी यही कहते हैं कि हमने बिजनेस ही करना है, अब तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। एक स्टूडेंट आ गया है ट्यूशन पढ़ने के लिए, 10 मिनट दिए, 15 मिनट दीजिए, ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क करें, मैं गया। बिल्कुल, ये लेकिन ये लोग कम है। अगर हम बात करें, देखें, अच्छे बुरे तो हर जगह ही होते हैं, ठीक है। ये चीजें तो हम नहीं कह सकते हैं कि उन 4 या 5 लोगों की वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो डेफिनेटली असरअंदाज तो होता है, ठीक है, लोग कहते हैं, लेकिन हमें उन 4-5 को छोड़ के बाकी लोगों को भी देखना चाहिए कि यार जो बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो क्यों अच्छा कर रहे हैं या वो अच्छा कर रहे हैं, तो हमें उधर जाना चाहिए ना। देखिए, अब पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि जो टीचर जो है ना
5 मिनट 10 मिनट पढ़ा रहे तो वो समझते हैं कि यार ये टीचर ने ना सारा नॉलेज जो है ना डिलीवर कर देगा, ठीक है, और वो अपने बच्चों को सारी इंप्रूवमेंट जो है ना वहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स टीचर सब मिलकर अगर हमारी सोसाइटी के लिए काम करेंगे ना तो फिर वो हमारी चीजें जो है ना बेहतर होंगी। खाली टीचर के ऊपर आप छोड़ देंगे तो फिर भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर आप खाली पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देंगे तो तब भी प्रॉब्लम आएगी। यानी पेरेंट्स को अगर टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा टीचर कोई है जो कि 10-15 मिनट लेक्चर पढ़ा रहा है तो आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो आप अपने बच्चे से जब पूछेंगे तो बच्चा आपको बताएगा, तो फिर आप उसको वहां से चेंज करवाना के कहें कि यार ये स्कूल का टीचर है तो ये मार्क्स दे देगा, तो यार मेरे बच्चे की जो है ना वो 7, 8, 9, 10 जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर हमारे लिए एज अ पेरेंट जो है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राइमरी स्कूल अगर है उसका टीचर की जो तालीम है वो कितनी होनी चाहिए ताकि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें? अच्छा, तालीम तो मेरे ख्याल से मिनिमम जो है वो BS तो आपका होना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्राइमरी स्कूल के लिए खास तौर पे BS के साथ जैसे B.Ed वगैरह एक ये चीज कंपलसरी, और प्लस जो कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि वहां पे जो बच्चा बैठा हुआ है बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, जो कि नर्सरी प्रेप 1, 2, 3 में है, ठीक है, वहां पे जो बच्चे की ग्रोथ है वही एक्चुअल ग्रोथ है, ठीक है। तो वहां पे अगर हमारा जो टीचर होगा वो उसने चीजों को समझा होगा, देखिए एक तो वो उसने एजुकेशन इस सब्जेक्ट का नॉलेज है, हम समझ गए सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जिस कम्युनिटी को उसने पढ़ाना है अगर उस कम्युनिटी के बारे में उसको आइडिया नहीं है, उसको पता नहीं है कि कम्युनिटी को कैसे लेके चलना है, तो वो फिर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। टीचर को बच्चे के साथ कैसे रब्ता करना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा हो, ठीक है, तो कुछ समझदार हो तो अच्छी कारकर्दगी दिखाए, कैसे होना? एक होते ना यार फलाना टीचर आ गए, मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये पीरियड मैंने नहीं पढ़ना, होते हैं बच्चे ऐसे, बिल्कुल ऐसा चले जाते हैं बच्चे, ऐसा मेरा टीचर ये अच्छा टीचर नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ाता, डांटता है, ठीक है, तो राब्ता कैसे होना चाहिए? अच्छा, इसमें ना टीचर को ना 2 जगह पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक तो वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस माइनर उसको इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा अगर टीचर के पास इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है ना, ठीक है, उसे नहीं पता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो वो स्टूडेंट जो है ना फिर सवाल करते हैं, तो अगर उसका आंसर नहीं मिलता तो स्टूडेंट ये सोचता है कि टीचर को उस चीज के बारे में नहीं पता, तो टीचर को अपने उस जो एंगल है वहां पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और दूसरी जो चीज है वो स्टूडेंट के साथ जो है ना अच्छे तरीके से प्यार से बिहेव करें, ठीक है, ये मार का दौर नहीं है, ये प्यार का दौर है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से लेके चलना है, उसको डे 1 पे बताना बेटा कि हमने अपने कोर्स के अंदर सिर्फ इस सब्जेक्ट को कवर नहीं करना है, बल्कि इसके साथ साथ हमने इन सभी दूसरी एक्टिविटीज हैं उनको भी लेके चलना है। अगर आप एजुकेशन के अंदर एक्टिविटीज डाल देंगे ना तो चीजें जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएंगी और चीजों से स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है, ठीक है। अगर खाली आप उसे पढ़ाते ही जाएंगे, सुबह शुरू हुआ आपने एक लेक्चर शुरू किया, आपने 45 मिनट पढ़ाया, कल फिर आए, फिर आपने 45 मिनट पढ़ाया, तो वो फिर जो है ना स्टूडेंट आपसे जो है ना बाजार हो जाएगा, ठीक है। अगर सरकारी टीचर जो हैं एहतजाज करते हैं, रोड के ऊपर निकलते हैं, तो जो प्राइवेट टीचर हैं यूनिवर्सिटीज के हैं या कॉलेज स्कूल के हैं, तो आप लोग साथ देंगे? अच्छा, इस चीज पे अभी कहना मुनासिब नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि अब देखते हैं कि वो टीचर अगर तो एक्चुअल हक पे निकले हैं, ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि 2-4 लोग भड़का के टीचर्स को ले तो आते हैं वहां पे, ठीक है, और वो बाद में अपना फायदा लेके पीछे हट जाते हैं और जो एक्चुअल जिनका फायदा होना चाहिए वो होता नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर तो इसी बात है बहुत से लोग जो है उनका साथ नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो वाकई हक के लिए निकलेंगे, चीजों को लेके चलेंगे, तो बहुत से लोग जो है उनका साथ जरूर देंगे। पहले भी मैंने देखा, आज से 2-3 माह पहले की बात है, जब टीचर्स आए और फेरोजपुर रोड बंद किया उन्होंने सेक्रेटेरिएट के बाहर, कोई काफी अरसा बैठे रहे वहां पे, मेरे ख्याल है 1 हफ्ते से ऊपर बैठे रहे वहां पे, कोई उनकी बात नहीं मानी गई। मुतालबात कुछ ऐसे थे उनके, कहा जी मुतालबात हमारे, फिर वो शेलिंग की गई, फिर मार कुटाई हुई, फिर फैसला हुआ ठीक है सब कुछ हो गया। टीचर की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? टीचर की आवाज इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि हमने टीचिंग साइड पे जो है ना वो चीजों को लेके चले नहीं है, ठीक है। हमने टीचर को सिर्फ एक ऐसा पर्सन बना दिया यार इसने मुझे पढ़ाना है, बस, इससे अलावा हमने उसे वो रुतबा दिया ही नहीं है। अगर आप उसे वो मकाम, वो रुतबा सोसाइटी में देते तो शायद वो 10 दिन भी उन्हें ना बैठना पड़ता, वो अपनी आवाज एक दफा बुलंद करते तो उनका मामला सॉल्व हो जाते। बहुत सी जगहों पे मैंने लास्ट एक न्यूज में पढ़ा कि वहां पे जब एक अदालत में एक टीचर को पेश किया गया किसी कंट्री में, तो वहां पे वो जज तो था, वो स्टूडेंट था उसका, तो वो खड़ा हो गया, ठीक है। तो वहां पे लोगों को बेसिकली बताया जाता है कि टीचर का एक मकाम है और हमने उसका अदब करना है। जब आपने उसके अंदर से अदब ही निकाल दिया, आपने उसको कहा कि सिर्फ ये पढ़ाने ही आता है, बस पढ़ा के वापस घर चला जाता है, तो फिर उसकी आवाज दबेगी। तो ये अदब हमारे पास क्यों नहीं है? बाहर है, हमारे पास क्यों नहीं? जैसे आपने बताया अभी कि स्टूडेंट खड़ा हो गया, अदब,
ठीक है, हमारे पास तो टीचर सामने खड़ा हो तो हम बैठे होते हैं। क्योंकि आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपने तालीम को बिजनेस के तौर पे जो है ना प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्राइवेट की बात करते हैं, ठीक है, आपने वो वे नहीं प्रोवाइड किए गए जहां पे उन चीजों को होना चाहिए। ठीक है, आपने टीचर्स को सिर्फ क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दिया, आपने टीचर्स को इसके लिए भेजा नहीं कि आप आज क्लास में जाएंगे, आज आपने पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपने एक मॉरल लेक्चर देना है और उस पे जो है ना स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। आपने स्टूडेंट के साथ रिलेशंस नहीं बिल्ड करने दिए, आपने कहा कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो है सिर्फ दूर दूर का ही होता है। ठीक है नाज़रीन, शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Met some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ एक गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ज़िशान अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ज़िशान, अब जो टीचर है और स्टूडेंट, जो रिस्पेक्ट का जो दरमियानी फासला था वो ख़त्म हो गया है। अब मैं अक्सर देखता हूँ स्टूडेंट होते हैं अपने टीचर से शादी कर लेते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट वाला जो माहौल ख़त्म हो गया है, दोस्त बन गया है, इस तरह का माहौल चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, तो फिर स्टूडेंट कैसे अपना मेयार को बुलंद करेगा? इसमें ना दोनों साइडों से जो है ना वो हमें काम करने की ज़रूरत है। टीचिंग साइड से भी हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि टीचर्स को इस चीज़ के बारे में यार बताया जाए, उसकी जो है वो ट्रेनिंग की जाए। क्या स्टूडेंट का एक म्यार है, आपने उस चीज से जो है ना ऊपर नहीं जाना है, आपने वहां पर रह के उनके साथ जो है ना काम करना है, लेकिन एज अ फ्रेंड काम करें, ठीक है। आप एज अ दुश्मन बन के और उसको सिर्फ खाली टीचर बन के ही काम कराएंगे तो फिर भी जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। रिस्पेक्ट का दायरा तो फिर भी नहीं है। अगर मैं बात करूं, हमारे जो टीचर थे जिन्होंने हमें गाइड किया, हमें पढ़ाया मैट्रिक में, आज अरसा हो गया, तो हम जब भी जाते हैं उनसे मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ चीजें जो है ना लेके चली हैं। अगर मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं भी वहां पे यही करता हूँ कि यार मैं अपने स्टूडेंट के साथ अच्छे तरीके से मिलता हूँ, सिर्फ क्लास में नहीं, क्लास के बाद भी मिला हूँ तो मैंने उन्हें वो रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे बेसिकली सोसाइटी में मसला कहाँ पे है? रिस्पेक्ट का। आप जब अगले पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। आपने स्टूडेंट को किस लिए बना देंगे? अच्छा ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप वहीं पे रहो, बात बताओ मसला क्या है। आप जब इस लेवल पे टीचर करेगा तो फिर रिस्पेक्ट का दायरा तो खत्म होगा ही होगा, ठीक है। आपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से लेके चलना है, आपने उसे रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। आप रिस्पेक्ट देंगे, वो जिंदगी में आपको कहीं भी मिलेगा तो आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज पूरा है, आपने एक दफा चीज को डिलीवर कर दिया और आपका वो सेमेस्टर, स्कूल, कॉलेज खत्म हो गया, और अगर आपने अच्छे तरीके से डिलीवर किया हुआ है तो 10 साल के बाद भी वो स्टूडेंट आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने सब्जेक्ट में वीक रहे और आपने उस चीजों को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं किया तो फिर डेफिनेटली वो स्टूडेंट कहीं भी मिलेगा तो वो यही कहेगा ये मेरा टीचर है, बस, इससे ज्यादा की तरफ नहीं जाएगा। ये भी एक वजह होती है, किसी इदारे में अगर पढ़ा रहा है, प्राइवेट इदारा है, सरकारी तो सबको पता है क्या सैलरी है, इस हालात जो चल रहे हैं इस टाइम, तो टीचर इस वजह से भी डिस्टर्ब होता है मेरे ख्याल में, कि उसके जो अखराजात होते हैं घर के आगे पीछे वो चल नहीं पाता, तो इस वजह से तो डिलीवर नहीं कर पाता अगले बच्चे को पढ़ाने के लिए। सही सी बात है, वो तो फिर हमारी पूरी कौम के साथ सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट में चीजें, गवर्नमेंट चेंज होती रही, आपको पता है लास्ट 2.5 ईयर में काफी ज्यादा जो है ना वो महंगाई हो गई है, ठीक है। तो एक आम बंदे के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, ठीक है। और टीचर तबके की सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। हम प्राइवेट स्कूल्स वगैरह को देखते हैं तो वहां पे अगर 20-25 हज़ार 20-25 हज़ार 30 हज़ार तो उसमें एक घर का गुजारा नहीं हो सकता है, ठीक है। जब आप उसे उसका मुआवजा ही नहीं देंगे तो वो फिर कैसे काम करेगा? टीचर की सैलरी क्यों कम है, क्या वजह है? देखें, बनाने वाला टीचर है, ठीक है, अब कहीं पे कोई लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर बैठे, कोई भी है, ठीक है, बुनियाद किसकी होती है? माँ बाप के अलावा उसके बाद टीचर होता है, बिल्कुल, जो उसको बुनियाद बनाता है, खड़ा करता है, पिलर को खड़ा करता है, पिलर फिर आगे जाता है वो, ठीक है। तो उसकी सैलरी आप कम दे रहे हैं उसको, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ बिजनेसमैन भी तो मौजूद हैं। अगर आप देखें किसी इदारे को बनाने वालों में टीचर्स मौजूद है ना तो वो इदारा बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। और अगर बनाने वालों में बिजनेसमैन मौजूद है ना तो फिर वो इदारा एक टाइम के बाद जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपके ख्याल में अब तो बिजनेस हो रहा है मेरे ख्याल में? नहीं, अगर आप कहें कि सिर्फ बिजनेस हो रहा है तो ऐसा नहीं है, बहुत सी जगहों पे बहुत सी अच्छी चीजें जो है ना डिलीवर की जा रही हैं, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे बिजनेस भी हो रहा है, ठीक है। उनके लिए कोई फर्क नहीं है, स्टूडेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ इदारे हैं जो स्कूल, कॉलेजेस लेवल, यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। वो काम किस लिए कर रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है किसी तरीके से इंप्रूव हो जाए और वो मार्केट में जब जाए तो वो एक अच्छा जो है वो पर्सन बन के जो है ना प्रेजेंट करे अपने आप को। ज़िशान, अब जो ये फैसला हुआ टीचर्स का, ठीक है, और जितने भी अब लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं कि मैं टीचर बनूंगा, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाऊंगा, क्या वो जब ये देखेगा ये सूरत हाल तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में तो नहीं रहेगा, वो सीधा कहेगा कि मैंने अमेरिका या यूएसए इधर जाना है, बाहर ही जाना है। बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है कि अब हमारे जो यंग जनरेशन जो अभी बीएस करके आ रही है वो मास्टर करने के लिए आपको पता बाहर मूवमेंट कर रही है, वो वहीं से पीएचडी करके वहीं पे लोग स्टे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो चीजें जो है ना जो उनको एक पर्सन को रिक्वायर्ड होती है। देखिए, अब टीचर जो है ना आपसे ये नहीं मांग रहा कि आप मुझे ना 16 करोड़ दे दें या 12 करोड़ दे दें, वो आपसे एक मैनुअल चीज मांग रहा है कि यार इतनी एक डिमांड है एक पर्सन की, मेरी एक एजुकेशन है, मेरा एक घर है, तो मैंने उसको चलाना, तो मुझे इतनी सी एक चीज चाहिए। आप जब उसे वही चीज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो फिर आपके पास थोड़ी रहेगा, फिर वो बाहर किसी ना किसी जगह पे चला जाएगा, वो बेशक टीचिंग वहां पे करे ना करे, कोई और जॉब कर लेगा, लेकिन
लेकिन कम से कम वो अपनी फैमिली को पाल पाएगा, अपनी फैमिली के जो ज़रूरियात हैं वो उनको अच्छे तरीके से पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे एक टीचर के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होती है, सेम एज इट इज़ उसके लिए उसकी फैमिली में इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो फैमिली को नहीं चला पाएगा और क्लास को सिर्फ चला रहा है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप उस एक तबके के लिए एक आप फिक्स कर देना कि यार एक पर्सन है आपके पास BS लेवल पे आया तो उसकी जो है ना मिनिमम सैलरी जो है ना इतनी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट स्कूल वैसे कितनी होनी चाहिए ताकि उसका घर भी चल सके, उसका अपना खर्चा भी चल सके? अब वो चीज़ जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास महंगाई के ऊपर। जैसे अगर सपोज एड में एग्जांपल लेते हैं, आपने 50,000 सैलरी तो डिसाइड कर दी, कल को महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है उसकी 50 में नहीं गुजारा हो रहा। ठीक है, तो फिर आपको उसके साथ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप उसकी सैलरीज वगैरह को ठीक है स्लैब बनाएं, प्राइवेट इदारों में भी स्लैब बना दें कि यार प्राइवेट इदारे जो हैं जब भी कोई टीचर हायर करेगा वो BS लेवल का करेगा तो उसको इस सैलरी पे मिनिमम, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस फिर उसको ज़्यादा जैसे भी दिया जा सकता है। और अगर मास्टर लेवल का हायर करता है या PhD लेवल के हायर करते हैं तो उसको मिनिमम जो है ना इतना थ्रेशोल्ड जो है ना हम लोग देंगे ताकि जो है ना वो एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छे तरीके से जो है ना रह सके और हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको ट्रेन कर सके। ज़ीशान, यूनिवर्सिटी कॉलेज अब जो मंशियात का जो धंधे वो अरूज के ऊपर है, लड़कियां नशा करती हैं, आइस का नशा करती हैं, सिगरेट पीती हैं और भी काफ़ी नशा करती हैं, लड़के नशा करते हैं, तो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी कॉलेज जो इंतज़ामिया एक्शन क्यों नहीं लेती? बहुत सी जगहों पे लिए भी जाते हैं। ठीक है, हाँ अगर स्कूल या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के जो अपनी मैनेजमेंट है अगर वही उसमें इन्वॉल्व होगी तो फिर तो एक्शन नहीं होंगे ना। ठीक है, स्टूडेंट तो बर्बाद ही हो रहा है ना फिर तो। उससे स्टूडेंट नहीं बर्बाद हो रहा है बल्कि वो एक पूरी फैमिली खराब हो जाती है। ठीक है, वो किसी का भाई है, ठीक है, तो वो किसी का बेटा है, ठीक है, तो वो इससे ना सिर्फ एक पर्सन नहीं खराब हो रहा है बल्कि पूरी एक कम्युनिटी जो है ना वो खराब हो रही है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि सबसे पहली बात कि हमारे जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके करीब जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया था काफ़ी देर पहले कि स्कूल या कॉलेज से जो है ना आपकी पान शॉप या सिगरेट वाले जो लोग हैं वो दूर होने चाहिए, लेकिन फिर भी उसके साथ ही मैंने उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। मतलब उन्होंने फैसला कर दिया। क्या स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो मालिकान है बड़ा माफी है, स्ट्रॉन्ग है, कैसे लिए दूर नहीं होती चीज़ें ये सारी? नहीं, गवर्नमेंट भी इस पे ना एक्शन नहीं लेती है। मतलब वो उसने रूल्स तो लगा दिया कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, बाद में फिर उसको किसी ने देखा ही नहीं क्योंकि तालीम की तरफ किसी का रुझान नहीं है, उनका रुझान जो है डिफरेंट दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ है। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो स्कूल कॉलेजेस से दूर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि अगर वो दूर होंगी तो फिर जो है ना वो स्टूडेंट वहाँ तक जाएगा तो हो सकता है वो सोचे अच्छा मैं कल देख लेंगे, तो वो एक चीज़ जो है ना काफ़ी बेहतर हो सकती है उससे। ठीक है, तो वो चीज़ें उनके पास जो है ना खासतौर पे जैसे हम कॉलेज से बाहर निकले तो साथ ही पान शॉप होती, कोका 10-12 लड़के वहाँ पे खड़े, तो अगर वो वहाँ पे नहीं होंगी तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है ना वो सोसाइटी का जाएगा। ज़्यादातर किसकी शरह ज़्यादा है, लड़कियों की या लड़कों की? इसमें शरह जो है वो ज़ाहिर सी बात है लड़कों की ज़्यादा है। ठीक है, लड़कियां खासतौर पे क्योंकि उन्हें पेरेंट्स वगैरह रिसीव करने आते हैं तो वो स्कूल कॉलेजेस में रिसीव आ रहे हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद फौरी तौर पे जो है ना चले जाते हैं। लड़के खासतौर पे अपनी कम्युनिटी उन्होंने खुद सारी चीज़ें करनी होती है तो उसमें जो है ना बॉयज़ की ज़रा थोड़ी ज़्यादा, लेकिन हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। उसको पढ़ाई पे कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जब एक बच्चा नशा करके क्लास में बैठा हुआ है उसको पता ही नहीं है कि मेरा टीचर क्या मुझे लेक्चर दे रहा है, वो सिर्फ लेक्चर का नहीं उसका रिस्पेक्ट का दायरा भी जो है ना वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि टीचर कुछ भी कहेगा तो उसे लगेगा कि शायद ये मेरे बुरे के लिए कह रहा है, ठीक है, मुझ पे गुस्सा कर रहा है, लेकिन एक्चुअल तौर पे टीचर उस पर गुस्सा नहीं कर रहा है बल्कि उसकी इंप्रूवमेंट के लिए उसको कह रहा है कि यार ये चीज़ आप ना करें। ये सारी सिचुएशन है। टीचर को कैसे समझाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का तो वो कहना नहीं मानता, दोस्तों को ठीक है साथ बैठा होता है, ठीक है नशा हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, टीचर को कैसे समझाना चाहिए, किस तरह गाइड करना ताकि उसको गुस्सा भी ना आए और टीचर की बात भी मान जाए? वो आपको हर स्टूडेंट के हवाले से उसके हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि हम सभी लोगों को एक नेचर में लेके जो है ना वो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक अम्ब्रेला, इस अम्ब्रेला में जितने भी लोग हैं वो हर किसी का जो है ना एक अपना लहजा, एक अपनी कम्युनिटी है, उसका एक अपना बैकग्राउंड है, तो आपको उसके हिसाब से जो है ना उसको ट्रेन करना पड़ेगा। यानी कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह में, यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे डिपार्टमेंट होने चाहिए, ठीक है, जो डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ स्टूडेंट की काउंसलिंग के ऊपर काम करें। ठीक है, वो काउंसलिंग सिर्फ मार्क्स लेने के हवाले से नहीं होनी चाहिए बल्कि एक सोसाइटी में रहना कैसे है इस चीज के ऊपर भी होनी चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग हो रही है स्टूडेंट की कि नहीं? किसी इदारे में? काफी इदारों में हो रही है, इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है लेकिन बहुत सी जगहों पे नहीं भी किया जा रहा है। ये अगर यही काउंसलिंग स्टूडेंट के ऊपर भी करते हैं, साथ टीचर के ऊपर भी कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा होगा मेरे ख्याल। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, काउंसलिंग तो हर इंसान की होनी चाहिए क्योंकि हर इंसान जो है वो अच्छे बुरे की तरफ जो है ना जा सकता है। तो अगर कोई भी पर्सन है वो एज अ टीचर है, स्टूडेंट है, तो अगर वो
किसी एक सोसाइटी से निकल के दूसरी सोसाइटी में एंटर हो रहा है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि यार हम इसको बेहतर कर सकते हैं, हमारा रोल क्या है सोसाइटी में और हमने इसको कैसे लेके चलना है। अच्छा, ऑनलाइन का जो तरीकाकार पहले अपनाया गया कोरोना में, फिर आपके सामने हालात पाकिस्तान में, कोई ना कोई धरना होता है तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, तालीमी निज़ाम बंद हो जाते हैं, फिर हम ऑनलाइन पे आ जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पे। ऑनलाइन और जब टीचर के सामने बच्चा बैठा होता है कितना फ़र्क होता है इसमें? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि जब कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के सामने बैठा है ना तो वो किसी भी काम को कर रहा है ना, तो अगर वो इसको नॉमिनेट करता है कि अहमद आप मेरी बात सुने, तो वो फिर अहमद उस बात को सुनता है। लेकिन जब वो ऑनलाइन में बैठा होता है तो उससे पता है टीचर तो देख रहा नहीं है, ठीक है, तो वो फिर तालीमी निज़ाम जो है ना वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ऑनलाइन की सिचुएशन होनी चाहिए वो स्टूडेंट की गाइडलाइन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपने पढ़ा दिया तो उस तरह के लेक्चर जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल होने चाहिए, ताकि अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट वहां से सुन सके। तो वो सिचुएशंस होनी जरूर चाहिए, लेकिन अगर पूरा निज़ाम ही वो उसके ऊपर चला जाएगा तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है फिर चीज़ों को चलाना। रिशान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपने सीनियर लेक्चरर रिशान अकरम की बातें सुनी और ये अब वक्त बताएगा कि स्कूल प्राइवेट होते हैं नहीं होते। अगर प्राइवेट स्कूल हो जाएं तो जो गरीब का बच्चा है वो कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं, जो महंगाई है वो अरूज के ऊपर है और गरीब का बच्चा अभी भी बाहर है स्कूलों से, और जब प्राइवेट हो जाएंगे स्कूल तो फिर भी बाहर रहेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कि गवर्नमेंट को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। अगर फैसला कर भी लिया है, डिसीजन कर भी लिया है, तो इसको वापस लेना चाहिए। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash.
Hello everyone. Today I'm on my favorite topic. The topic is students, learning, knowledge, and that is life. When I was a little boy, my mother spoke to me about the qualities of a student. I must have been 10 maximum, and it still rings true. There's a Sanskrit phrase which I'm not any good at reciting, but the meaning is, as a student, you have to be as focused as a stork. You know, when the stork is looking for fish, focused as a stork, struggling as hard as the crow. You know, the crow keeps trying, and as ready to wake up like a dog. You know, a dog has very light sleep. So gone are the days, these days, it's not quite like that, but a student has to be totally devoted to learning. There's nothing called being a student, really. You have to be a learner. A teacher can never teach you. What's it called? You can take a horse to water, but you cannot make it drink. You can sit me in school, I'll be daydreaming, playing with the pencil, flying little aeroplanes, looking outside, looking here, or looking straight and thinking about what's happening at home. What am I going to eat tonight? Why did he bully me? Oh, he looks very smart. Why did the teacher give him? So you cannot force someone to learn. You can encourage someone to learn. So the word student actually means to be eager, to be jealous, to be wanting to do more, to be zealous also, desiring to study. And the word student comes from the Latin word studare, which means the eager, zealous, hungry person. That is the meaning of learning. So learning is the active process. Teaching doesn't work. You cannot teach anyone anything. The person must want to learn. Yes, I know people sit with thin books, mathematics overnight, or physics by a learned professor for 5 rupees, and you pass your exam. But it doesn't stay with you. In Hindi, it's called Aaye Ram, Gaye Ram. Ear one ear, out the other. So that is not learning. Learning has to not only be intellectual, you also have to believe in it, and you have to act it out. So if you are a professor of mathematics, and I say to you, the price of one candle is 99p, how much is price of 5 candles? 4.95. How did I do that? Because it's 1 penny less. So 1 penny less minus from 100 is 5. So out of 5 pounds, you reduce 5. Why I'm good at it is because I learned to like mathematics. By the way, I've spoken English for the last 73 years in some form with my Indian accent and everything. But I still have a book by my bedside called Fowler's Modern English Usage. I've lived in England for 47 years. I'm still learning English. It's one of my passions. I want to speak English better than the Englishman. I'm here now. And even my Hindi, meri Hindi bhi utni buri nahi hai. And I'm learning by sitting among Urdu speakers. I'm learning to say zira, takalluf. How you speak, how you pronounce matters. It's how you dress. If I dress like this, you think I'm an Englishman. If I dress in dhoti kurta, he's come from the Indian village. If I dress like a Maharaja, you'll think, oh, he's... So dress is as important as pronunciation. But getting back to being a student, so the student has to be eager to learn. If you're not hungry, you don't eat. Doesn't matter how good the food is. You cannot make me eat. If I'm hungry, simple food tastes very nice. So you have to be hungry for knowledge. And in Islam, the first word is ikra, which means knowledge. They say you have to go to China if necessary to learn. So that means you have to take extreme difficulties. My life as a student was quite easy. I went to a Catholic school and the priests were good and very open. I learned hobbies. I enjoyed my class. I was with a fellow in Bangalore and his son says, Dad, I want to be in my school for this weekend. So I asked him in detail, why does your son who lives at home want to be? He said, oh, they are bringing a microscope and a telescope and he wants to be in the queue to look at stars. That's what it is about, to be hungry, to want to learn. I myself learn every single day, whether it's a new word, whether it's something in politics, whether it's to do with painting, whether it's to do with Indian classical music, anything to learn. Because if you're not learning, you're not growing. The beauty of the human is what's between our ears, the brain. And if the brain is not fed, it shrinks, literally and symbolically.
So why do we learn? Because we want to grow. Why do we go on Mount Everest? Because we want to grow. Why do we go on adventure holidays? We want to go there. I've recently been to a cave 300 million years old. It's underground in Yorkshire. Why did I have to do this? I'm not a fit athlete, but fit athletes wouldn't have the courage to do it because they're very narrow passages. What's the worst thing? I'll die. That's the only fear we have in life. If you're not afraid to die, you can do anything. So coming back to knowledge and learning, learning is what humans are about. Not teaching, not being a student, being hungry, being wanting the knowledge, being wanting to learn. And when I see students with their feet on the table, sitting with the professor across the table here in the UK, it doesn't work. It does not work. The student has to be humble as well. In India, we have the Guru Shishya tradition. And in other cultures, we have Ustad Shagird. And they say, Ustad ka hukka bharo. Look after your teacher. Respect your teacher. Kabir said in Banaras 400 years ago, Guru Gobind dono khade kaake lagu paaye, balihari Guru aapne jin Govind diya bataye. This is Kabir, a very uneducated person technically, but he had a big influence on the Hindus. He was a Muslim, he was a weaver, never went to college or school, but God had given him wisdom. And he said, if my teacher, my master is there, my Ustad, and if God is standing, I'll go to the Ustad and saying, please teach me how to reach God. So we respect teachers very much. And if you don't do that, you cannot learn. Because knowledge can flow from the teacher to the student most of the time, not the other way around. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। Did you know that the first university in the world with 5,000 teachers and 20,000 students, do you know where it started? It's near Rawalpindi. It's in Takshila, Taxila, Takshila, the first university in the world, 3,000 years old. So knowledge is very important. People traveled all those. They didn't have telephones, they didn't have wireless, they didn't have Facebook, they didn't have WhatsApp, they hardly had paper. And at that time they used to write on copper and so on. So, and people came from China, people came from Iran to learn there in Takshila. Now, the qualities of a student I was telling you, let me say it in English. First is curiosity. As a medical student, I wanted to learn how the heart flickers. So I had a frog's heart, and you'll put one drop and the speed goes up with adrenaline. And the same thing happens in human beings. So you have to have the thirst for knowledge. The second quality is diligence. If you take a topic, stay with it, stay with it, stay with it till you learn enough and you're sick and leave. Perseverance. Doesn't matter if the book is not in the library. You can't find it anywhere. If you keep looking, it'll appear. One day the maker will give it to you. Another quality is discipline. If you're sitting learning in the library, you can't say, I'll go for a bottle of Coke now. Oh, I'm feeling hungry. There's no point doing it. You have to be totally diligent about it. Another word is creativity. Sometimes somebody will teach you. Sometimes today you can learn from the internet. So there's many ways of learning. But there's another thing about learning that most people don't talk about. It's called unlearning. If I have got a knowledge, for instance, you say nothing travels faster than the speed of light. Wrong. They have proven that you can go faster than light. At one time, they thought the world was flat. Wrong. We now know it's round. So you have to let go of the past and keep looking at today and tomorrow. That is what research is about. The word research means moving on. And our belief systems about science, about arts also moves on. So you have to let go of the past knowledge and take on fresh knowledge.
update yourself. And if you're doing that, you'll be a happier soul. You'll be looking at the world through fresh and broader eyes and enjoy more things. One thing personally I'll tell you, if I don't like a subject, I go and research it. Because if you like something, you can be in an emotional, psychological, educational bubble. You know one subject very well, but if you meet people, you can only talk about that, like a professor in one subject. Nothing wrong with knowing one subject deeply, but you need some width of knowledge. So I've told you the qualities of a student. I'll repeat: curiosity, diligence, perseverance, disciplines, creativity. These 5, but I'll add unlearning the past. I could talk about formal education. I've already mentioned Takshila. And that was the proper university. And by the way, there was no student fees. Everything was taught free. Because knowledge is very important. Knowledge is what humans are different from monkeys, elephants. They also learn. The idea that humans are the only intelligent beings is not correct. They are good in other fields. Bees, do you know that bees dance to tell the other bees where the honey is? They're giving them the GPS of where the flowers and therefore honey to be nurtured is. So they give the message. And did you know that when swans fly, the swan in the front works very hard. And if a swan is ill, it starts weakening, a second swan goes down with it. Where did they learn to be compassionate? It's all fact, you know. And then when they are better, they join another group and fly together. So we have a lot to learn from animals too. There's a lot we teach them, but there's a lot they can teach us. Or look at children in our own species. Children have a lot to teach us. They are pure-minded. They get angry for a few minutes and they're fine again. Look at a dog. Someone who kicks his pet dog, the dog still forgives and loves them. There is a very famous story about Japan. There was a professor who had a pet dog. He was a single guy. He would take the dog to the railway station, tie it there, leave some food, go and work in the university, come back, take the dog home. One day, the professor unfortunately died in the university. And the dog waited and waited, and the station master could see this. The station master found out. And that dog has now died, obviously, but they have erected a statue. It's about learning from animals, about loyalty. All of you who have pets know how quickly they learn. But the learning of animals is a bit simple. You have heard about the Pavlov dog, where you ring a bell when you give it food. You ring a bell, you give it food. You don't give it food and you ring a bell, the dog will still salivate. This is conditioned learning, means it's a reflex. So when I drive a car, I don't think, oh, that's the steering wheel, oh, that's the brake, oh, that's the clutch. It becomes automatic. So learning should be such that ordinary things stay in the back of the mind, and the special things is what you have to focus on. So when I'm driving, I've got the GPS on, so it tells me turn left and right, even when I know the road. Because my mind is distracted, I'm thinking. If I'm focusing on the road, I become stressed and I'll drive worse. But my senses are all alert. I'm seeing from the corner of the eye, I'm listening for any signs, I'm watching a bus and a child beyond it. If it's a school bus, a child may run across, and so on. So you learn a lot more about how to do things when you can do it subconsciously. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study.
We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash.
So let me tell you about my own student journey. In school, obviously I studied what was given, but I started feeling I'm meant to be a scientist because I was good in chemistry, I was good in biology, but I also found interest in music. There was no music in my family, but I was interested. So I didn't let go. I kept this in the back of the mind. I made my own guitar because I could make the frets and started learning as best I could. You know, at that time there was no internet, no YouTube, but still I had the knowledge in my head. I heard songs and I started playing. On the science front, one day I had 7 boys, my classmates, holding hands, and I put a little transformer, and with a 1.5 volt battery, I gave them a shock which was very high in voltage but very low and didn't kill them obviously, and they went like that. At that moment something happened in my brain. Am I doing this because I want to serve science, or am I doing this because I want to influence people? And I think I made the right decision. I like people. Science is to serve people. And at that time and from then on, I worked with that principle that whatever I learn has to be useful, not just to me, but for all of us. And then I decided physics wasn't the right subject. It's too dry. For me, I'm not saying it's bad for everyone, and I wouldn't be stuck in a university doing research. I'd rather engage with people and make knowledge democratic. So I started looking at what's best for me, and I figured out medicine would be best. And again, I repeat, technical medicine is fine, but not for me. Research is fine, but not for me. And I decided that being in contact with people, raw, fresh, like in general practice, family medicine, was my cup of tea. And with God's grace, I got into the vocational training scheme, which teaches me how to be a doctor, of course, that was my degree, but how to converse with people, how to speak to district nurses, what the chemist does, what the practice nurse does, what the health visitor does, etc., etc., etc. So I got a whole picture, and I landed in a very good practice to do medicine. But that didn't stop me, because I wanted to know other ways of helping people than just by giving tablets or a sick note or just some other form of administration. So though medicine it was, but people came to me and I wanted to look beyond the symptoms. I did a whole research over a year, and I was funded by the Royal College of GPs in London. Probably this was the first research which was not scientific but soft skills. And the paper was an in-depth experience of GPs' attitudes and how their knowledge of the psychology of the patients affects the doctor's job satisfaction. I interviewed 75 doctors for an hour each. And I couldn't afford to do any further studies, but that completely proved that if you're interested in the human, apart from the symptom that they're giving you, you get a much bigger reach. Because somebody might come with a black spot, and it's because their wife said, oh, you better get it checked, could be cancer. Or they're genuinely concerned, it could be cancer. And if I don't say, look, it's not cancer, but if you're worried, I'll get a hospital test. So there came a time when I realized I had to learn the soft skills properly, which is not taught in medical school anywhere. So I went to Durham University for 2 years part-time and did a diploma in counseling. And my interest in medicine took me into all manners of healing, whether it's acupuncture, homeopathy, retinopathy, or any form that teaches you, a human being, to relax. Healing of any sort. So anything that gets a human being better was of interest to me, because nobody else does it. In fact, I presented a whole case called Arts in Health, in which I got musicians. We measured brain waves to show how the two halves of the brain calms down. The Arts Council of England gave me £3,500 to buy equipment called Mind Mirror, which measures the electric waves of the brain, which is quite complicated, but it shows the two halves. And when the two halves match, that means you're in unison and you're prepared to learn. And I found definitely that when people are singing or praying, the two halves of the brain become unison. So it's like saying the whole team is working together in unison. Otherwise, the mind is thinking one thing, the mouth is saying something else, and your activity is third, which I keep telling you doesn't work. So the whole mind, body, spirit has to be one. And I think in medicine, my old profession, it is very important to gel with the patient, to understand them,
to change the vocabulary. If you're talking to a child, you use different words. If you're talking to a university professor, if you're talking to a doctor, the vocabulary changes, the ideas change, and you have to fit in that person at that time. So I hope I'm trying to show you that it's constant learning, and I'm still learning. Every day I'm learning something new, and my curiosity hasn't gone, my diligence hasn't gone, my concentration hasn't gone, and my ability to look forward and change the old idea, throw it away, hasn't gone. And that is why I feel I'm able to give you something from my own life experience, as I promised in this part. So all I have to say to you is, for human beings, it is very important. In fact, it is critical. If you want to stay happy, you need to learn something every day. It's not enough just to stay alive. To live, you have to live amongst people, you have to mix with people, you have to share, you have to give what you can, and they give you what they can. And that is what I feel life is about, because life is about growing physically, mentally, emotionally, and as a learner. So that's all for today. See you next week with another topic. Thank you. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea, बहुत बढ़िया." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब अवाम उन फलों को नहीं ख़रीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से अवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं, जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं।
It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Met some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well.
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vidya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं,
काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा।
Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट वजीहा खालिद। वेलकम टू माय शो स्ट्रीट बाइट्स। एक नई और मज़ेदार एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं इकबाल टाउन मून मार्केट में, जहां हम देख रहे हैं कि लोग घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ मौसम को एंजॉय करने आए हुए हैं। तो आइए लोगों से कहते हैं मजे की बातें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद तलहा। तलहा, क्या करने आया? वैसे ही दोस्तों के साथ खाने पीने के लिए आए थे। मौसम अच्छा है, मौसम बड़ा प्यारा है इसलिए। और पाकिस्तान तो वैसे ही आपको पता है कि अल्लाह की एक रहमत है, और आज अल्लाह की एक और रहमत हुई है कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो मौसम इंजॉय करने? जी, मौसम इंजॉय करने के लिए आए हैं। बड़ा अच्छा मौसम बना है, तो इसलिए मैंने दोस्तों का चाय वगैरह पीने चलते हैं। शुक्र है कि गर्मी गुजरने के बाद अल्लाह ने इतना अच्छा मौसम दिया। तो ये मौसम अगर बारिश होगी तो क्या करेंगे? कुछ बात नहीं, फिर ज़्यादा रहमत हो जाएगी ना। ऐसे मौसम में फिर बारिश भी अच्छी लगती है। अच्छा, वैसे फ्रेंड्स या फिर फैमिली, किसके साथ घूमना ज़्यादा पसंद है? मुझे तो फ्रेंड अच्छा लगता है, क्योंकि फैमिली ज़्यादा पटीक डालती है, फ्रेंड कम डालते हैं। फ्रेंड से कभी बंदा फ्रेंड से खा लेता है, कभी खुद से खिला देता है, और फैमिली को खिलाना ही पड़ता है, उनसे खा नहीं सकता बंदा, इसलिए। तो आपके दोस्त की 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ ज़रा बताओ। मेरे एक दोस्त की ये खूबी है कि वो जब भी उसके साथ खाने पीने के लिए आए वो ही पेमेंट करता है।
और दूसरी खामी एक और, वो मेरा दोस्त है, वो जब उसके साथ आए मुझे खुद ही पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए फिर मैं उसे कम बुलाता हूँ। जो पेमेंट खुद करता है दूसरे के साथ मैं ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि जो वो पेमेंट खुद दे देता है ना, वो मैं निकालने का बहाना करता हूँ, वो खुद ही दे देता है। और दूसरा कहता है चल यार निकाल, मेरा वॉलेट घर रह गया, फिर इसलिए मैं उससे कम आता हूँ। जो खुद पेमेंट दे देता है उसके साथ मैं ज़्यादा आता हूँ। यानी खाने में मज़ा आता है, फ्री का खाना। हाँ, मुख्तबरी लगाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, अगर आपको सारी उम्र एक ही रंग पहनने को मिले तो वो कौन सा कलर जो आप सारी उम्र पहन सकते हैं? मैं वाइट कलर अच्छा लगता है, इसीलिए आप वाइट पहन के? हाँ मैं लेकिन वाइट तो गंदा जल्दी हो जाता है ना। लेकिन मैं एहतियात करता हूँ, तो ये मैंने जुमे वाले दिन का पहना, देखने अभी तक फ्रेश ही लग रहा है। गर्मी में भी इतने दिन पहन लिया? ये गर्मी में ही पहन लिया, बस मैं ज़रा कितर वगैरह लगाता हूँ ना, तो अल्लाह का शुक्र है, करम। अच्छा, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, वैसे किसी के घर मेहमान जाना ज़्यादा पसंद है या फिर किसी का मेहमान का घर में आना ज़्यादा खुशी देता है? मेहमान आ जाए वो भी अल्लाह की एक रहमत है। मेहमान जब किसी के घर आता है वो अपने नसीब लेकर आता है, और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेहमान के बिना खाना नहीं खाते थे, इसलिए मैं ज़रा मेहमान नवाजी पसंद करता हूँ कि दोस्त वगैरह आते रहें, उन्हें बंदा खाना वगैरह कुछ खिलाता रहे, अच्छा वक्त गुजर जाता है। तो आपको खुद जाना इतना पसंद नहीं है कि मेहमान का आना ही ज़्यादा अच्छा लगता है? वो आते हैं फिर वो भी हमें कहते हैं कि आप भी हमारे पास आएँ, फिर हम भी उनके पास जाते हैं। जी से जी है ना, जैसे किसकी आप किसी को इज़्ज़त देंगे और जब आप उसके पास जाएंगे वो भी आपको इज़्ज़त देगा। तो कोई शेर व शायरी आती है आपको? नहीं, शेर व शायरी तो नहीं आती, वैसे एक शेर बोल देता हूँ कि गुलाब का फूल है ज़रा नरमी से तोड़ना, जान भी चली जाए तो नमाज ना छोड़ना, क्योंकि नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है और हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैं दोस्तों को भी पैगाम देता हूँ आपके रेफरेंस से कि नमाज के बिना ज़िंदगी नहीं है। नमाज़ पढ़ें और अपनी मुश्किलात अल्लाह को बताएं, और ऐसे मौसम में बाहर निकला करें, अपनी फैमिली को भी टाइम वगैरह दें, और मौसम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका नाम? शिराज अहमद। शिराज अहमद, क्या करते हैं शॉप आपकी? जी भाई की है। भाई की है। तो कैसा जा रहा है आपका काम? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब से किया स्टार्ट आपने ये काम, कब से हो रहा है? हमें ऑलमोस्ट 5 to 6 months हो गए। अरे माशाल्लाह। तो चीज़ों के हवाले से क्या रिव्यूज़ होते हैं लोगों के? चीज़ों की अच्छी क्वालिटी है, लोग आते हैं, रिपीट करते हैं, कस्टमर जो एक दफ़ा आते हैं वो बार बार आते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। तो इधर मार्केट में सबसे अच्छा खाने के लिए क्या है, क्या ज़्यादा पसंद करते हैं आप? डिफरेंट है, बाहर सारी फूड शॉप्स हैं, लोग आते हैं, चाइनीज़ शॉप्स वगैरह भी हैं, दूसरी भी हैं, जो लोगों को अपने टेस्ट के हिसाब से वो आ जाते हैं उस साइड। नहीं, आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? बिरयानी वगैरह भी है, दूसरे फूड्स भी हैं। अच्छा, वैसे फास्ट फूड या देसी? दोनों को बराबर बराबर, डिपेंड्स ऑन मूड। बिल्कुल ऐसे ही। तो कुछ भी कुछ बना लेते हैं जी? खुद भी कुछ बना लेते हैं? अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, वैसे क्या लगता है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे? बना लेंगे। क्या क्या बना लेंगे आप? इजाद की माँ है, जो दिल करेगा वो देख लेंगे। अच्छा, वैसे स्कूल टाइम ज़्यादा अच्छा था या कॉलेज टाइम? दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट की है। माशाल्लाह। तो तीनों में से कौन सा टाइम आपका ज़्यादा अच्छा गुजरा है? फर्स्ट वन इज़ स्कूल टाइम एंड देन यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज को क्यों निकाल दिया दरमियान से? कॉलेज भी ठीक होता है, लेकिन कॉलेज के अंदर 2 साल होते हैं तो उनका इतना फील नहीं होता। यूनिवर्सिटी 4 to 5 years होते हैं, और स्कूल लाइफ है वो भी 7 to 8 years होते हैं, तो डिपेंड करता है फिर। अच्छा, तो स्कूल लाइफ में फ्रेंड के साथ कोई फ़नी मोमेंट जो अभी तक याद हो? डोंट रिमेंबर। अच्छा, वैसे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, किसके साथ घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं? फ्रेंड्स के साथ फिर ज़रा ओपन हो जाता है, ओपनली है। फैमिली के साथ भी ठीक है। नहीं, यानी फ्रेंड्स के साथ घूमना ज़्यादा पसंद है, उसकी वजह कि ओपनली हो जाता है। फ्रेंड्स के साथ अब ये है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपने डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स के, उसके अंदर शरारतें भी आ जाती हैं, ऑनेस्ट मोमेंट भी आ जाते हैं, वो सारा। अच्छा, अगर आपको सारी उम्र एक ही कलर पहनना पड़े तो वो कौन सा कलर होगा जो आप सारी उम्र पहन सकते? दैट वुड बी ब्लैक और वाइट। एक ही कलर यानी ब्लैक? ब्लैक की वजह? पसंद है। बस पसंद है तो सारी उम्र पहन लेंगे। अच्छी बात है। तो कोई गाना वाना आता है आपको, सॉन्ग? और कोई पोइट्री? अरे वाह। तो फिर कोई मैसेज दे दें। मैसेज सिंपल यही है। किस तरह का मैसेज? मोटिवेशनल और व्हाट? जो भी जहन में आया आपके कि आपको लगता हो कि पब्लिक को देना चाहिए? ये अपना मेन मोटिव इज़ कि कभी किसी को कॉपी ना करें, खुद को खुद के अंदर बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, उसके अंदर ही अपने आप को आगे लेके जाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? रज़ा अहमद। क्या करते हैं आप?
ये हमारे पाँचों वाली शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कैसा जा रहा है आपका काम? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब से करें आप ये काम? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। लोगों के क्या रिव्यूज़ होते हैं चीज़ों के बारे में? लोगों को पहले जो चीज़ हमें 100 की आती थी वो हमें 200 की आने लगी है, महंगाई हो गई है। तो लोगों के क्या आगे से रिव्यूज़ होते हैं? चीज़ अच्छी होती है क्वालिटी के हिसाब से? लोग कहते हैं वो जो चीज़ पुराने रेट पे थी वो हमें पुराने रेट पे मिले, लेकिन महंगाई ज़ाहिर बात है महंगाई होगी तो लोग जो है ना ज़्यादा पैसे नहीं देते। चले कोई बात नहीं, होता रहता है। ये हमारे वैसे डिस्काउंट किससे ज़्यादा मिलता है? डिस्काउंट देते हैं आप? जी देते हैं जी। किसको, औरतों को या लड़कियों को, किसको ज़्यादा मिलता है? सबको देते हैं, मर्द को भी लेडीज़ को भी। नहीं, एक औरत होती है, एक होती है लड़कियां। देखें मेरे जैसी होती हैं लड़कियां बच्चियां, और जो बड़ी होती हैं वो औरतें होती हैं। तो किसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है? कौन ज़्यादा डिस्काउंट लेके जाती हैं बहस कर? औरतों को। औरतों को? वो बहुत बहस करती हैं। कितनी की चीज़ कितने का तक करवा के ले जाती हैं? 100 की चीज़ वो 80 में ले जाती हैं। अरे वाह, इतना डिस्काउंट! वैसे तो ना 100 की चीज़ वो 50 में लेके जाने को होती है कि भैया मैं फ्री मिल जाए। नहीं, ऐसे ही होता है ना, वो आई इसी इरादे से है, लेकिन हम नहीं करते इससे, ज़्यादा नहीं ना करते। अच्छा, क्या आपको साड़ी में एक ही कलर पहनना पड़े तो वो कौन सा कलर होगा? वाइट कलर। वाइट कलर, उसकी वजह? वो मेरे नबी को पसंद था, वो आप सारी उम्र पहन लेंगे? जी। अरे वाह! और अगर सारी उम्र एक ही खाना खाना पड़े तो वो कौन सा खाएंगे? वो